गानी की स्टोरी खेलेंगे आज से। मैं स्टोरी के लिए बचा के रखा था कि मेरे को मिला। Wait, did I leave my apron outside to dry? It's shocking how much work there is to do, even for the three of us. And she's been handling it alone all along. The Qixing secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. Huh? You're... Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. Have you seen Miss Ganyu, Traveler? पंजाब वाइट येलो ब्रो, क्या हाल चाल? It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. Even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Joyun Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now. But Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at UPI Pavilion saying there is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. Speaking of Julian Karst, Traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course. We've been there lots of times. That's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. We're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her बीरस क्या हाल चाल? It's about time she came back to work. Otherwise... No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. निंगवांग के पास जाना अपने को? So Ganyu left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mel Outside? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. तो ग्लिच है ये बहुत सारा। कैरेक्टर को अपग्रेड करने की चीज़ें पहले ले लेते हैं। इधर बहुत कमाता हूँ।
MK हेलो गानियों की मैं वो कर रहा हूँ अभी स्टोरी। गानी आने वाली है ना वैसे भी बैनर पे, तो मेरे को उसकी स्टोरी करने का मौका मिला अभी। जोंगली और गानियों, वही। पर जोंगली का तो मैं स्टोरी कर चुका हूँ, तो गानियों का बच रखा है, गानी का करेंगे। जोंगली का स्टोरी कर लिया मैं। स्टोरी में ये होता है कि हम खेल सकते हैं उन कैरेक्टर के साथ ना, ऐसा सीन। फुल करो पुल करेंगे भाई अपन, तो देखेंगे, ट्राई करेंगे निकालने का। जोंगली निकल गया तो अच्छी बात है। अभी तो गानी को ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। वो रही। Person standing over there. That's Ganyu. We finally found her. मिल गई हमको। Ganyu, here you are. You two. I did not expect to meet you here. Is it official or private affairs that bring you here? Ah, I shouldn't. I have left the human world. Huh? You don't want to be the Chising secretary anymore? But they're all waiting for you to come back. That's why you're here? You want me to come back? I'm afraid you came here in vain. हाँ, ये मैं कितने पुल में मिली पता नहीं मेरे को। ये What? मैं पुल करता हूँ, मेरे को याद नहीं है, पर 60 के अंदर ही अंदर मिली है The ऐसा। clouds fold and unfold. The tide ebbs and flows. It was meant to be. When the Adepti entrusted 54 humans something with पे मिली थी। overseeing Liyue, I knew it was only a matter of time until I had to leave. My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue Harbor. I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced by Baiwen, Baishao, and Baishun. हिस्ट्री में देख सकता हूँ, देखता हूँ अभी हिस्ट्री में Perhaps देखता हूँ। that mission of mine was just a pretext to remove me. I appreciate your kindness, but there's no need for your words of comfort. After 1,000 years away, I came back to Julian Karst. But Who disturbs the peace of these mountains? Cloud Retainer, we're terribly sorry. We just... One merely jests. One felt your presence the moment you set foot upon this land. Wow, you Adepti really are impressive. Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. A matter leaves you at an impasse then. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. Yes. Since you are Ganyu's friends, tales from her youth shall one apprise you of, perhaps? Oh, Cloud Retainer. Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Oh, Paimon wants to hear it. Little Ganyu loved when the horns on the top of her head were caressed. When one was still taking care of her, one was pestered most often to touch her horns. She was elsewise loath to sleep. Wow. Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the flesh. So fearful she was that she hid in a rock's cleft for 2 days and nights. One found her wailing of a monster she had seen. Cloud Retainer? Forget it. It's about time for my training. I will take my leave.
हमको खेलने को मिलेगा ना बस इसके साथ, Ah, तो one's पता चल intention जाएगा was मैं कैसा merely to relieve the खेलता awkward हूँ. tension. And you did the exact opposite. Impressive. Be that so? Huh. But returning to Ganyu, most gladdened one is of your arrival. One cannot help but feel that remaining in Jueyun Karst shall not be good for her. One will tell you more about her, if you should permit it. Most benevolent among all Adepti are the Qilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Jueyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Jueyun Karst. When I look at the sea of clouds in Jueyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. One did, by chance, hear this much of Ganyu's thoughts. Alone, she will find her predicament hard to conquer. One hopes that you will accompany her. Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Besides, Liyue hasn't given up on her. She's got it all wrong. Anyways, what's that training Ganyu was talking about? She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Jueyun Karst. She should be in the southern part of Mount Aotsong right now, preparing for the trial. Huh, is that so? Let's go take a look then. फाइट है ना इसमें बस. अभी तो मेरे को आर्टिफैक्ट्स भी वो नहीं करना आता है. पता नहीं मेरे को क्या क्या इसको देना है. ये सब चाहिए मेरे को क्राफ्ट करने के लिए. अपना वेपन क्राफ्ट करना है मेरे को भी. So here you are, Ganyu. Why did you come here? Humans should not remain in the realm of Adepti for too long. Considering the kindness you have shown me, I can let you stay for the Adeptus training. Yay! This trial was prepared by Cloud Retainer. Its goal is to help me feel like an Adeptus again. The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too unaware of the abilities of others. Is it difficult? No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. If you're ready, we shall begin the training. गानी बन के खेल रहे हम तो. पर एमिंग के अंदर ऐसी की तैसी होनी चाहिए. मेरे को ये एम करने में दिक्कत है सबसे ज़्यादा.
मेरे को इसकी वजह से वो वाले कैरेक्टर पसंद नहीं, क्योंकि मैं खेल नहीं पाता इनके साथ। एमिंग करने के लिए आईपैड को उठाना पड़ता है। रिमूव करते हुए कैसे मारूंगा मैं इसको? ये फाइट देने चाहिए थी, तो ये ट्रेनिंग दे रखी है इन लोगों ने इधर। फ़ोन होता तो अच्छी बात होती है, एक तो आईपैड के अंदर कैसे करूँ मैं? ये भी हो गया। सबसे हार्ड है एम करना, इसके अंदर एम नहीं होगा अपने से इतना। और मैं इधर से क्यों भिड़ा हुआ हूँ? आगे भी तो जा सकते, मैं देखा ही नहीं आगे जाने के लिए। मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं इधर पास में तक नहीं मार पा रहा हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा मैं कंप्लीट कर पाऊंगा इसको। ट्वेंटी 3 सेकेंड रिमेनिंग है। ना नहीं पाएगा। अबे एंड मोमेंट पे मेरा क्या बोले, कोई नहीं, इस बार पता है कैसे कैसे करना है, पास में जाके कर लेंगे। So here you are, God. Why इसको did you स्किप come करते here? हैं। This trial was prepared by. The training is much to her. Is it? No, I'm aware of your strength, traveler. If you're ready. कोई नहीं, इस बार कर लेंगे। आईपैड को उठाना ही पड़ता है मेरे को फिर में। एम क्यों नहीं हुआ? ये मिशन फिर मोड पर खेलो मतलब? ये तो बहुत टाइम लेगा वैसे भी।
मैं क्या पास पास में जाके मार के आऊँगा इनको? यही करता हूँ। नहीं देखो, आईपैड में एमिंग बहुत ही बेकार है। पीसी होता तो पीसी में एमिंग करना इजी रहता है, पर ये चीज़ आईपैड में बहुत ही ज़्यादा वो करती है। एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास ये तो है, मैं इससे कर लेता हूँ एमिंग। पर इसका क्यों बो ही नीचे जाता है पूरा? लॉक नहीं करता क्या टारगेट को यहाँ से? क्या हमें इससे करना पड़ेगा? हाँ, इधर जाके करते हैं। Wow! Ganya's a really awesome shooter! If you could see through the eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. क्या सब मिस ही तो कर रहा हूँ मैं। तो इन इस बार ट्राई करेंगे कि हो जाए एक ही बार में। मेरे को बो वाले कैरेक्टर मतलब मैं खेल नहीं पाता हूँ, मेरे पास भी पीसी होना चाहिए था। इनसे खेलना हार्ड है। ये क्या मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पहुँच के? We've completed the नहीं, task. पर मैं आईपैड पे हूँ ना, आईपैड What पे do you think? एमिंग करना थोड़ा मुश्किल है। फ़ोन तो रहता है, उसको उठा के आराम से खेलते हो तुम, पर ये आईपैड के अंदर सीन I अलग है। agree. You possess many qualities similar to those of Adepti, despite having none of their blood. इतने दिनों बाद मैं मेन स्टोरी कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से मैं स्टोरी वैसी वाली करता हूँ ना तो बोर हो जाता हूँ। Ganyu, what were you planning to do once your training was over? The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? No. The only Adeptus who can unlock my true potential is Who is it? Conqueror of Demons. Huh. So it's Shao. That cold-hearted loner? How come he's prepared a trial for you? I found him unapproachable at first, too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. मेरे को फाइट करने का इसको एक बार लिखे, Of course we are. Let's go. पता चल जाएगा कैसा चलता है सीन। ये तो वो जगह है, क्या बोलते हैं, जिधर हमने वो वाला कुछ किया था जिसमें फूड रखना था टेबल पे। न्यू कैरेक्टर है। You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. I'm sorry.
I had a meeting with Cloud Retainer. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between us. Xiao is such a strict teacher. You're neither an Adeptus nor a human, always treading the line between the two worlds. Instead of explaining yourself to me, you should face your true self. I have nothing to hide. The body and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. मैं रेडी हूँ, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है. ये होता है अगर मैं इसको मतलब ऐसे ही जमीन पे रख, मतलब क्या बोलूँ, टेबल पे रख रखा हूँ आईपैड को. क्या सीन नहीं हो रहा है? किसको हिट करना है इसको? अबे ट्रेनिंग करना है इधर, मतलब फाइट आएगा इधर. चलो, डिफीट 26 मॉन्स्टर. मेरे को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता. मैंने सुना इसको होल्ड करके मारने में ज़्यादा डैमेज देती है. This is long overdue. Access denied. क्या गलत है ये तो. पूरा तो बर्फ ही बर्फ कर दिया इसने इधर. Don't stand too close to me. Put the ship down. Born of ice and frost. Glaze over. No touching. Your grand finale. Eat this. This is long overdue. मैं एमिंग करने में फाइट करते करते बहुत हुआ वो. ये सीन पर सही है अपने को. Teamwork is dreamwork. Born of ice and frost. मरते मरते बचा भी. For Rex Lapis. मैं यूज नहीं कर पा रहा, सीधी बात है. इसको कैसे यूज करते पर कोई नहीं, सही है जो भी चल रहा है. उनका लेवल भी ज़्यादा है, 82 लेवल के सारे के सारे. मरना नहीं, मेरे को मरना नहीं है. Let's light it up. I'm going in. No touching. Strike is one. All hail. Access denied. Next on. We're way behind schedule.
glaze over. मैं तो फुल बस्ट पे लगा हूँ बस। This is great. I feel so relaxed all over. I could almost float away. इसका वो सही था, सबको मतलब बर्फ में जमा दे रही थी आते जाते। फ्रीज करना मैं फ्रीज नहीं कर पाता। I've completed your trial. You don't have to report back to me. Seeking other people's validation won't benefit your training. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster that way. Understood. Xiao always has such strong opinions. From tomorrow on, I'll start raising the difficulty of your training, so you'll have to... I have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a part of your training. Pesky visitor? So even here there are those that Xiao can't deal with? Oh heavens! Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the Adepti! Are all of you the Adepti of this mountain? Great! My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O Adepti. Oh, so it's a pilgrim. Huh. He can handle any battle, but talking to strange humans is a different story, huh? I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect! I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. Doesn't matter. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. Adepti don't help every pilgrim for free. For free? Do you mean that you charge people for the blessings of the Adepti? That's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man, always nagging me. Your father must have experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships. A person of your age should focus on work and family, instead of chasing after fairy tales. Are you a real Adeptus? Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who pose as an Adeptus to cheat people out of their money? Ugh, how dare you reprove me? I bet you came here looking for the Adepti yourself. He might sorta have a point. We did come here looking for Ganyu after all. Enough. Doesn't matter if you're a real Adeptus or not. You're useless. I'm leaving. यूजलेस का बोल के चला जा रहा है। Ganyu, don't let that guy ruin your mood. It's not his behavior. The things he said... He was right. I thought that coming back to Jueyun Karst and devoting myself to training would make me feel like an Adeptus again. But being questioned by him made me realize that But I'm unwelcome in Liyue Harbor. As an Adeptus, It's true! Just believe us! Alright. I'll go with you to Liyue Harbor. That said, I still trust my initial judgment. If I'm proven right, I'll return to Jueyun Karst once again. It's a step in the right direction. Let's go! मान गई चलने के लिए। पर फाइट का हो गया होगा। फाइट चाहिए थी मेरे को, वो छोटी सी फाइट। The fireworks are gonna get soaked! Let's find shelter quick! Oh, we're not going to make it!
I'm still... Come on, Ganyu! We're almost there! You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a point. It would be quite impolite of me to leave the two of you now. That's right! Where do you want to go first, then? I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. Let's go for a walk in the port. Happy to come with. इधर जाने का शॉर्टकट इधर से. This is great. I feel so relaxed all over. I could almost float away. As I gaze out upon the sea, The sound of the waves in this familiar port. The smell of the sea breeze makes me nostalgic. Ganyu, you didn't leave Liyue for that long. Why do you look so moved? Well, I used to be so busy. I haven't taken a stroll around here in a long time. Huh, that's true. Ganyu seemed to be working all the time. Well, when I think about my time here, I've spent most of it behind a desk filing documents. It put me in a certain mood, similar to the one I felt during my training in Juyun Karst, in fact. Is that... It is! It's Lady Ganyu. I wouldn't have thought I'd meet you here. You were always so terribly busy. Lady Ganyu? Why are you calling her that? Please don't also start calling me that. Allow me to introduce Uncle Tian. He is... That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Liyue after all, and I am the one who has yet to introduce myself. Uncle Tian is a member of the Liyue Qixing, the Tianshu. What? This grandpa is a member of the Qixing? The same rank as Ningguang? Hush now. I must ask for your discretion concerning my identity. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards. In most people's eyes, I'm just a forgetful and wordy old man. Uncle Tian is too modest. He's been around for a long time. There's no one who can replace a person of such noble character. What an honor to receive such high praise from Lady Ganyu herself. I guess I must have done something right over the last, however many decades. Uncle Tian, please. A person of your standing should really stop calling me Lady Ganyu. My apologies. It's not intentional, just a habit from my younger days. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the Qixing. Oh, so you've been friends for many decades now, huh? Oh, I was just fulfilling my duties as the Qixing secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Talking about secretaries... I don't know if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter, Huixin. She seems to be a bit troubled recently. Yes, she works at UPI Pavilion and she's my junior. How can I help her? I don't know myself, really. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. May I trouble you to meet her at UPI Pavilion? With pleasure.
Solving the Qixing's problems has always been in my job description. She's back in character, just like that, huh? Let's move then to UPI Pavilion. चलो चलो निंगवांग से मिलेंगे जाके। ये क्या सीन होगा? इन सब से मिशन से ये सब करने पड़ेंगे मेरे को। नहीं, सब करता ही नहीं हूँ। तो मैं चढ़ भी पाऊंगा इधर? चढ़ तो जाऊंगा। Please be mindful of your personal Miss Ganyu, it's been too long. I don't know why, but seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times. Indeed, it has been a while, Huixin. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Qixing to trouble you. Don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from UPI Pavilion. Ganyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. So, what can you tell me about the problem? Ugh, where should I start? I discovered something strange while organizing tax records. There are obvious irregularities in the tax declarations of two stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Without any evidence, my hands are tied. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded by greed. Well, is there any solution you can advise? Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. All right. Let's approach it this way, then. Your enemy knows you best. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar wares. In that case... In that case... I know what you mean, Miss Ganyu. Miss Ganyu plans to let them expose each other. Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is... Bolai, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. और किस लिए हम घूम ही रहे हैं इधर? कुछ अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा अपने को। एडवांस रैंक फ़ायदा नहीं बढ़ा के उसको। क्योंकि अभी के लिए अगर मैं बढ़ाऊंगा तो और मेरे लिए मतलब अभी तो मैं बिल्ड भी नहीं किया अपने कैरेक्टर को। इस तरह मेरा एक कैरेक्टर भी बिल्ड नहीं है अभी।
पीछे जाना है। Up and away. अबे इसके पास कितनी बार आएंगे हम लोग? Aha, we meet again, traveler. And you must be from the... I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from UPI Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongsheng. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Tax records? Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolai? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. You know Second Life's business so well? Of course. Ugh, their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Line by line and word by word. दिखाई नहीं रहा तो लाइन बाय लाइन कैसे रीड करेंगे बता जरा. Ah, here I found it. That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh, he even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha, you're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. Thank you for shining a light on this case, Mr. Balai. Oh, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. I'm afraid I can't go to Chingsa Village. It's all right, Weishin. You can stay in Liyue Harbor and finish your work. Leave the rest to us. Ah, that's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. अपने को सॉल्व करने का है पूरा केस. एक मिनट, जब हम इधर आए गए तो इसको अपग्रेड करने में लगता है. इसको ये फूल ढूंढ लेते हैं इधर से जल्दी जल्दी. इतनी जगह पे एक है. ये बच्चा हमेशा घूमता ही रहता कैसे? अरे तेरे से बात नहीं करनी थी हट. एक और मिल गया. ये इस एरिया में बहुत मिलते हैं. इससे निंगवांग बिल्ड होती है, योंजिन बिल्ड होती है. जो दो कैरेक्टर है दोनों के दोनों उसी से बिल्ड होते हैं.
और ये भी चाहिए अपने को, बेरीज भी। ऑलमोस्ट सारा मटेरियल इधर ही रहता है। पहले तो बहुत मिलता था, अभी मेरे को सिर्फ 2-3 मिले सिर्फ रहते हैं। एक इधर से भी मिला। एक इधर से मिला है। इतना कम क्यों हो गया ये? बैनेट भी है मेरे पे। Adventure time. इनसे लड़ने का मतलब नहीं, अभी मैं अपना कोई कैरेक्टर बिल्ड नहीं किया। उनका लेवल ही बहुत ज़्यादा है। इनका लेवल 74 है और मेरा खुद का लेवल 60 है। 60-70। तो चुपचाप से लेके निकलते हैं सब। We go. मैं इसको क्या मारा था क्या शुरू में, जो मेरे को मार रहा है क्या? निकल। कुछ नहीं है इधर भी। अब चलते हैं।
ना टेलीपोर्ट करने का ऑप्शन है क्या उधर? ये बहुत बड़ी स्टोरी है अभी इसकी। कहाँ पे अटक जाता हूँ जा जाके। Can you? Ah, welcome, welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. Kingsa really is full of lonely old people. Hey, I heard that, Flying One. I'm sorry. Master Lu, we've just come to see you and ask you some questions. Don't worry, I know. You're from the UPI Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. Ask away, then. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking for proof that Dongshin from Second Life has been evading taxation. Dongshin bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongshin otherwise. Of course you can. But I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse. But some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. So that's what happened. I see. I'll leave you to it then. I need to get back to work. Take back the warehouse, find the invoice. Time for us to show our stuff in a fight. Wait, I think I saw one of those troublemakers. Ah, over there. Oh, Paimon sees them too. It's one of the Fatui. They must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. Besides, I can already feel their malicious intentions. Consider it Fight time. Fight time. my intuition as the secretary of the Qixing. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. Mm-hmm. Don't get frostbite. Frozen. Crisp. ये तो मेरे को फाइट करने के लिए बोल रहे हैं। मेरे को लगा कि हमको वो देंगे। मैं तो बिल्ड भी नहीं किया अपना कोई कैरेक्टर। मर जाएगा मैं तो। Teamwork is dreamwork. You're toast. No problem. And leap. The fuse is lit.
ये तो हरामी का मार चले जा रहा है, चले जा रहा है। मरने वाला है मैं। बैनिट आजा। बैनिट भी टपक जाएगा तो फ्रीज कर दिया। बाहर निकल। खत्म। मैं बोला ना, मैं अपने एक भी कैरेक्टर को अभी तक बिल्ड नहीं किया हूँ। खुद मर जाओ उधर ही। क्या सीन है, ये पानी के अंदर है और मेरे को कैसे मैं मरा। ये पानी में गिर के क्यों नहीं मर रहा है? अद्धे मैं मरेगा अभी। सचिन का तू पीछे ही खड़ा का। वही सोचू कोई है नहीं और मैं टपकने वाला हूँ। जी भाई रुक जा, जुगाड़ करता हूँ मैं वापस से। और बता। ये तो रहा चला ले, क्या दिक्कत है? मैं मर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं इसमें। अबे मेरे से पावरफुल है सामने वाला। एक काम करते हैं, इसको हटा के हेजू को लगाता हूँ। हेजू Let's move before the trail goes cold. कोई ना, मेरे को कोई आदत है। इसको हराने जाना है अपने को, हराने का है। गेट को साइड कर दे। देख रहा है क्या निकली है मेरे को। पर कोई मतलब नहीं, इसको बिल्ड करना है पड़ेगा तब मारती है। Frozen. Crest, you'll get frostbite. Flash frost. Off we go. The descent. Let's light it up. Why do they never miss? Freshness. इसके साइज से भी डबल है वो। ढकलेगा मैं। Let's light it up. I'm going in. That was discombobulating. एजू भाई संभाल ले, नहीं संभालेगा। इसको ऊपर आने में शर्म लग रही है, ये ऊपर नहीं आ पा रहा है। इससे दूर ही रहूंगा। अबे फंस गया मैं। Freshness preserved. Chill to the bone.
भगो भगो। बैनेट मार उसको, वो जाने ही नहीं दे रहे। खिसक लेगा मैं। बस थोड़ी देर और, कैसी की तैसी। उसका लेवल ही 77 है, वो तो देख 77 लेवल, और मेरा खुद का 70 लेवल चल रहा है। ऐसे होगा रे। तो ये कर ले बेटा, स्पैम कर ले। तू स्पैम ही करता रही हो ये जिंदगी भर। Nice and spicy. Fire hazard. Flash frost. Here come the fireworks. You're not going anywhere. क्या लोगे चच्चा मरने का, मर जाओ तुम। ये मोटा मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आना ऊपर, ऊपर नहीं आ पा रहेगा, नहीं हो पा रहेगा, ऊपर नहीं आ पा रहा है। इसको बैनेट का बस्ट फुल करने का सही तरीका है, इसको इधर ही फंसा के रखूँगा, एक बार मारो पीछे आ जाओ, बस बैनेट का बस्ट फुल हो जाएगा, उसके बाद इसको बचाता हूँ। हाँ कहीं नहीं जा रहा, ले आ गया। ये क्या हुआ, मेरे को मारने तक का मौका नहीं दिया। शेर थोड़ी ना होता है वो, शेर नहीं होता है। I think you've had enough. About time you tell us your plan. No? ऐसा We just taught you a lesson, but clearly you होता weren't होगा। paying attention. If you don't spill, we'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. If you're telling the अरे अभी तो truth, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। If you About to. pick berries over there. 5 बजे से पहले लाइव स्ट्रीम बंद भी नहीं होती है। I must admit, It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Chinxa Village is nothing more than a retirement spot for old people. What can... Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's ये warehouse? गानी भी गनी थी फाइट करने की। Fanmu Carpenter's warehouse? देखा चैट वेट आता है तो पता ही नहीं चलता है। I only came here. So it wasn't the डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर ले, कर सकता है his तो warehouse after all. डिस्कॉर्ड। जो भी मतलब गेम के उधर से आते हैं सब लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर रखे हुए। I misjudged the situation and offended you. My apologies. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. किसी ने किया क्या चैट? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us for Tui. Yes, precisely. इन बंदे की As फटती an कितनी है? alternative, you may try to solve this problem with force once again. Paimon's in. Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice then? I'll get back to my berries. What a bittersweet ending. I've पिटने made के a बाद laughing stock out of myself. No worries. It's always
nice to teach the Fatui a lesson. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our... देख इसके अंदर मेरे को भी इतने कैरेक्टर मिले हैं। देख ये सब रेजोल्यूशन कम कर रखा हूँ तो ग्राफिक पूरा। ये रिसेंट में मिली है अभी। These bombs so heavy. 70 लेवल है। No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. So this is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hair churls. Let's show them what we got. क्या मारने दे। ये मारने नहीं देते लोग इतने सारे हैं। ये जो भी सही है रिएक्ट करता है बहुत तगड़ा। पिट रहा हूँ अभी मैं। पिट गया मैं। Let's light it up. Adventure time. Let's light it up. Everybody stand back. Goes the ship down. That didn't count. Truth hurts. 11,000 का डैमेज। इसको भी तो डीबीएस बना सकता हूँ मैं। 8,000 का डैमेज देता। और एनिमीज You don't want to do this. Off we go. Let's light it up. Adventure time. Teamwork is dreamwork. ये सील्ड वाले कैरेक्टर। Let's light it up. Off we go. इनको डॉज करना कितना इजी है। I'm going in. Here come the fireworks. Get moving. I got a situation. It hurts.
light it up! रिट्रेट कम है मेरा इसलिए चुकता है रिट्रेट Let's light it up! Everybody stand back! That's gonna hurt in the morning. Bring it on! 11,000 All clear! Quick, let's look around for the invoice. This one is an invoice from One Min Restaurant. Some dining tables and chairs. That's not it. This one is Wangsheng Funeral Parlors. Oh, so they make coffins too. Confess! Fracture! Bring it on! इसको दीवार में घुसेड़ेगा ही पीले बड़ा गेट हल्का सा वो करते तब ज़्यादा ठंडी लगेगी मतलब थोड़ा सा गेट बाहर जा रहा होगा पूरा सीक्रेट चेस्ट This one is Second Lives. We finally found it. Let's bring this invoice back to Hoishin. इसके अंदर इतना पीछे को चल रहा है बंद हो गया क्या स्ट्रीम बोलना इसमें इतना पीछे को चल रहा है बंद हो गया क्या स्ट्रीम नहीं सही तो है इधर किधर चेस्ट है क्या Ms. Ganyu, you're back. I hope it wasn't too much trouble rushing about like... I promise to help you and I'll keep my word. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it... Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner?
Isn't it Huixin from the UPI Pavilion? I remember you. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Haven't I made myself clear? Mr. Dong— What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely absurd. He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for that Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Boalai's aid. Balai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Would you care to elaborate? I don't think you'll need my guidance for what comes next. Yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully. It's actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Pitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position. That's how Uncle Tian managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Ganyu solved both Huixin's work and family problems. 2 birds with 1 stone. Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. No need to be so serious. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. Alright, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. Oh, come on. It's just a meal. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huixin. Actually, I've already booked Senor Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. All right. We dare not refuse such generosity.
Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the two of you, your presence is also much appreciated. Sure. That's so kind of you, Huixin. You went to great lengths to organize this. Truth be told, apart from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you. Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my father used to tell me many stories about you, Miss Ganyu. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the UPI Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the UPI Pavilion turned out to be an arduous task. I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I disagree. You're a great secretary in your own right. Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the UPI Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20+ years, too. Huixin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. Witness? It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Huixin, you don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor. A part they rely on me, accept me, and of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qixing secretary. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. No time to waste. Let's get back to work. Good luck, Miss Ganyu. We're leaving already? I'm still hungry.
Baisha, are you okay? Did you fall asleep standing up? Look! Look who's back! You even have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We've been working for too long. If we didn't take a break, we wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all, given we've only met once. We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Oh, finally. We're saved. Yes. There's one more thing. I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't... to think that I'd gained a human friend outside of work. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? Sure, but are you ever done with work on you? Let's cross that bridge when we come to it, shall we? कंप्लीट हो गए तो कंप्लीट Adventure time! Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Time for a light show! You're toast! Bring it on! Get moving! Off we go! Everybody stand back!
adventure time! Off we go! Off we go! Off we go! Ad Astra Abyssa. You again. Look, I told you, we're not interested in the kind of cooperation you describe. Come on, there's no reason to get upset. Look, one of your members is an avid supporter of my proposition. Oh, since our last negotiation, I've come up with a new proposal. First things first. Wangshen Funeral Parlor will prioritize the Adventurers Guild requests above all others. That's not all. We also provide an on-site cadaver collection service covering almost all regions in Liyue. Now, we do charge a slight premium for a very small number of especially dangerous areas, but don't you worry about that. I promise you, it's still very affordable. I don't think you're hearing me. Okay, all right. I get it. You want to bargain a little more, but our offer as it stands is already quite a good deal. Don't you just think about it. An adventurer's life is full of unexpected threats. It's only natural to take precautions. Yeah, no. I'm not so sure that saying applies in this context. Speaking of precautions, I'd rather focus on keeping my adventurers safe in the first place. It's time for you to go. I have to attend to other matters. Oh, wait, hold on. Oh, what would you say to a group discount? 30% off for parties of 10? Director, please, you did your best. We don't need another clash with the Millilith. If Paimon understood all that correctly, it seems like she's trying to sell them the funeral parlor services. Yeah, nothing left to do here. Rejecting a once-in-a-lifetime opportunity. It's their loss. Some things are inevitable. It's only a matter of...
Anfang's ironmongers, here to serve. Adventure time! Nick, hello. Seems like the old I'll ways are check. the mug. Are you done preparing our promotional materials? Nah, my apologies. I'm only about halfway through. Trust me, they're going to work wonders. This marketing strategy has been used by Wangsheng Funeral Parlor for clients in need come to our door and write down their commissions on blank wooden tiles. I fulfill the requests written on each tile to make sure our clients are satisfied with the service, no matter if it's an obituary, cremation, or funeral that they seek. Although, it is a bit of a hassle with the constant back and forth. If only we could burn them by the batch. No, Director, I'm not asking about the wooden tiles themselves, but about the special offer they advertise. Wangsheng Funeral Parlor should keep up with the times. Just think about it. If we don't attract new clients, we'll be left with nothing, won't we? Business development is a crucial element of every prosperous enterprise. I've been trying various marketing strategies ever since I became the director. I put up posters just like all the other shops, but the Millilith promptly removed them. Then I organized the Wangsheng Visitors Day, but no one showed up. Well, that doesn't come as a huge surprise. And finally, I discovered that the traditional ways are the most reliable after all. So now, I go from door to door looking for people and organizations willing to cooperate. Just the other method I'm trying is using the wooden tiles as coupons. Just by writing things like, buy one, get one free for the holder of this tile on them. What do they buy and what do they get? A solid and durable second home, of course. Well, they may not need it right away, but they can be sure that when they do, it will still be as good as new. Alright, Mung, keep adding those special offers to the wooden tiles. The future of our business depends on it. I'm still not sure this will work. Oh, I get it. You think that our special offer is not comprehensive enough, right? It is true. I was offering all kinds of great benefits to the Adventurers Guild because they are a new client. But in doing so, I neglected my old clients. You're right. It's unfair. Let me do some market research. Wait here, my faithful assistants. I'll be... I already told you we're not your assistants! Guess we got dragged into somebody else's business again. Let's look around while she's away. I'm liking the look of this. You must be the director's new hires. Not us! We're just very curious about Wangsheng Funeral Parlor and Hu Tao. Well, I wouldn't get too curious if I were you. The director is tactful when it comes to what should... Her? Tactful? We should get going. Let's go find Hu Tao. That's settled then. Write it like this. Wangsheng Funeral Parlor Bumper Sale. Buy one, get one free. Buy two, get three free. More for your Mora. I love it. Better than all that lifeless brochure stuff. We want people to feel warm and fuzzy. But Director, isn't Lifeless the name of the game in this industry? That's old hat. We're opening up new ground. Why does Wangsheng Funeral Parlor need to open up? Yes, Director. Poor guy's giving up. Right, we should get going. I am not letting new business escape us. We? As in us? Who else?
Do you see anyone else around here? Oh, well, you probably wouldn't see them if there was. Stop adding little afterthoughts like that. It creeps people out. Just a joke. Sorry. Everything you see is everything that's present. Lighten up. The way I see it, people make death scarier than it really is. What people truly fear about departing this world is suffering and regret. To deal with the trauma, they let their imaginations run wild with notions of ghosts and evil spirits. Oh, baseless fantasies. What we've ended up with is a topic that people are morbidly afraid of talking about. If I don't broach the subject, then Wangsheng Funeral Parlor won't be long for this world. Oh, more approachable and appeasable than you'd imagined? Paimon wouldn't say that. Let's just say at least it didn't hurt us. You must have come across a particularly ferocious entity. How should I put this? The job of Wangsheng Funeral Parlor is to guard the border between life and death. One component of this is correcting notions of death and the afterlife that people may hold. So for ordinary folks, the best case scenario is ignorance of all matters concerning spirits in the afterlife, or even better, a belief that none of it exists. Then you really don't have any excuse for spooking the heck out of people. You make it sound so abominable. I'm just trying to get them to see the humor in it all. I never thought you'd be such a bore. Never mind. If you stick by me, everything will become clear. All right, let's get going. Follow me. Director, wait. What about Big G? Don't forget. Big G? Who's that? We've been in Liyue for ages and never heard that name. Oh, nothing. Just something Mom's been pleading with me to take care of. Should be a piece of cake. Where are we going? To visit an important potential client. I'll lead the way. Sorry, who are you? Hello, I'm Hu Tao, director of the Wangsheng Funeral Parlor. Okay, so why would someone from Wangsheng Funeral Parlor be looking for me? Nothing major. How are you feeling these days? Any aches or pains? You shouldn't ignore them, by the way. Very often they're an omen of something terminal. When we're healthy, it's easy to forget the crushing fragility of life. So, aches and pains, best to keep an eye on them. What are you getting at? I'm in great health and enjoying life very much, thank you. Go and find some other poor soul. Goodbye. Why did they get angry? What's wrong with a few earnest health tips? Paimon thinks it's because they're coming from the director of a funeral parlor. Don't bother me again. I'm doing just fine. Don't bother me again. I'm doing just fine. Fracture!
Be quick. I'm busy. Hello there. Would you be interested in understanding a bit about our services at the Wangsheng Funeral Parlor? Wangsheng Funeral Parlor? I'm not in need of your services. So you're out here looking for new customers? Don't you think this might be a bit of a crass way of going about it? Hardly. Isn't this the fashion these days? Bring the service to the customer and all that. I'm not sure it's every service that falls into that. Anyway, please bother someone else if you don't mind. Ugh, another failure. Still, not the end of the world. Paimon's curious. Does this approach ever work out for you? Yeah! I know your face. The Wangsheng Funeral Parlor director, right? I'm sorry, I'm really in no need of it. Don't apologize. Get to know us. We've got a new sale going on. Ever hear the saying, out with the old, in with the new? Well, going out with a bang is the best way to start off in style on the other side. If you keep talking like this, I'll have to call the Millilith. No. Okay, relax. We're leaving. But Wangsheng Funeral Parlor awaits your distinguished patronage. You really don't give up, do you? Are you trying to make me feel better? Well, thank you. Seems you understand me far better than most people. Not really. This is just getting really uncomfortable. Business development? Is that what you see this as? Surely you don't think all that was business development? Then what was it exactly? Traumatization for its own sake? No. The business development ended after the discussion with the Adventurers Guild. I was helping to find somebody for Meng. You remember Big G? As it turns out, the Big G that Meng is looking for is a ghost adrift in the mortal realm. The three we saw just now were all people I suspected of being followed by Big G. So we just had a quick chat, and I left it at that. Why didn't you say so? Paimon thought you had some kind of sixth sense for, people in declining health. Huh? What would I need that kind of ability for? I'm no doctor. Were you seriously hoping that the director of the Wangsheng Funeral Parlor was going to start healing people? Or Paimon was trying to subtly imply that... never mind. Paimon wouldn't know how to explain subtlety in a way you'd understand. Well, let's leave that for now and head back to Wangsheng Funeral Parlor. This Big G matter is very closely linked to Meng. Join the Adventurers Guild. Meng, I'm back. I'm afraid we're still no closer to finding Big G. I see. Well, I'm just sorry for the trouble. Who is this Big G anyway? I guess I should start at the beginning. Big G was one of them. We were the best of friends. Inseparable, really. But I've never forgotten. Too many memories, I suppose. I often return to Wuwang Hill. But recently, after one such visit, I started to feel strange. Now, every night, Big G appears in my dreams. I can't help but wonder, did I disturb him somehow? Perhaps.
I don't have proof, but I can't stop worrying. How would I ever come to terms with my childhood friend becoming an evil spirit? That's why he joined Wangsheng Funeral Parlor. In place of a salary, I'm helping him deal with this matter. And in fact, what Meng has said is entirely plausible. Spirits on occasion do find a way into our world. But as for evil spirits, I think you're scaring yourself. Even I have only encountered malevolent forces a handful of times. But are you sure there's no danger? I couldn't bear for him to go around harming people. You see what I mean? Look at the state of him. If we can't find Big G, it'll eat away at Meng forever. Those people we found today were also Meng's childhood friends. I thought there was a good chance Big G might have hidden among them. But here we are, empty-handed. Wulong Hill, childhood friends? Seems like we're out of leads. Sorry, excuse me. Is this Wangsheng Funeral Parlor? My name's Luo Chung. I've had this awful feeling recently, like something's staring at me. Some of my friends and I went to Wulong Hill the other day on a dare. After I returned home, I fell ill. I've been having recurring nightmares, but the doctors can't find anything wrong with me. I think that it's a curse, right? I've been cursed by a demon. Say no more. There's no doubt it's a demonic curse, all right, and a serious one at that. You believe so too? Then it's just like they say in the tales of old. The vengeful spirits of the gods who fell in the Archon War return to cast their evil curses upon mortals. And if the curse isn't lifted, it will burn through the body, laying waste to flesh and bone. Oh, what a wretched end! The symptoms I'm having are just like those described in the tales. Wulong Hill? No, I don't think it was a curse. It was probably just Big G. Hold your horses, both of you. There's no need to creep each other out. Isn't that exactly what you like to do, though? Wangsheng Funeral Parlor specializes in demonic stuff like this, right? All right. Don't panic. Leave it to me. You've come to the right person. However, in order to lift the curse, we need a suitable location, and we need to make some preparations. Come with me, my trusty assistants. I'm going to need your help. I guess I'll come too. Help him make the preparations first. The incense exorcism, the one I taught you. When you're ready, come and find me. Once we've finished with this, we'll get back to the Big G matter. Okay, I guess. Right. Let's go. Rituals are you gonna perform here? No ritual at all. We just need to kill some time. Eh? Wait, you didn't take all that vengeful god's curse stuff seriously, did you? You saw those two. One thinks he's been cursed, and the other one believes his friends turned into an evil spirit. Now you see why I believe that ordinary folks should be kept in the dark. I've seen too many people lose their senses on account of things like this. If you want to calm them down, you need to convince them with something tangible. And the best way to do that is to make a great show of destroying the boogeyman they believe in before their very eyes. Sounds like that might work.
if you're onto something. After all, we're only afraid of what we don't know. Because you can't guarantee that telling an ignorant person the truth will improve the situation instead of exacerbating it. What I can do is pretend to pull back anyone who believes their time is nigh. But since the curse is imaginary, our fix will also be make-believe. Makes sense. But why would anyone believe that it's a curse? Do you know the history of the Yaksha? They once fought against the ancient gods. They fought brilliantly in a battle that engulfed the whole world in darkness. Although the gods were defeated in the end, their resentment persevered. That resentment turned into a pestilence spreading amongst the ordinary folk. Hysteric people mistook it for the curse of the gods. The plague took the lives of many, which only furthered its spread, as the dead were a breeding ground for the disease. Then someone discovered how to prevent it from spreading. Paimon didn't see that coming. Really? Yes. Anyway, it took many years, but eventually the plague was completely eradicated. We've dealt with similar phenomena multiple times throughout the ages. Each time we successfully restored the balance between life and death. To sum it up, we are gatekeepers, guarding the border for the sake of both the living and the... So when I say this curse is just a figment of the imagination, I say it with more certainty than most. But anyway, let's wait a bit more and get ready for the show. This leyline monolith will make for a really great prop. You're finally here. We just finished our preparations. Now, look here. This device is used to drive away evil spirits. It'll absorb the curse inside you and cause it to take a physical form. But don't worry, the traveler here is a seasoned warrior and will assure our safety. Oh right, I forgot to tell you. It'll be fine. Will that really solve my problem? Trust the director. She might look like a weirdo, but she's serious about everything she does. How can you call me a weirdo? I mean, wouldn't you say it's more charmingly naive or disarmingly different? Alright, let's get down to business. My glamorous assistant, please activate the device. Is it really possible to materialize the curse? Confess! Bring it on! Gooba, get them! Here come the fireworks! I'm counting on you! Segwa! Yeah! Truth hurts! Fracture! That was discombobulating. Fire hazard! Cool the ship down! मेरा तो इधर से ही नहीं है एकदम से घटिया. Let's light it up! Off we go! Let's light it up!
feeling? Did the curse leave your body? Yes, I feel more invigorated than ever before. I'm cured. I can't express how grateful I am for your and the Traveler's help. If it hadn't... Great. In which case, I guess now I can tell you. You've been pranked! What? This exorcism device? People like you wouldn't recognize it, but it's just an old ley line monolith, deceptive, and those were real monsters, not a manifestation of your curse. So riddle me this. If I didn't do anything to lift the curse, then what's the cause of your sudden recovery? The curse wasn't real? Then why was I sick? Well, you caught a cold, ate something bad, or just scared yourself sick. It's anyone's guess, but I'm leaning towards the last option. Wouldn't be the first time in my career. How unexpected. I also didn't expect that, but still, I'd like to thank you. Don't mention it. I found a way to deal with your fears this time, but I can't do it over and over again, so I'd appreciate it if you try not to give in to superstitions in the future. Human life is short. Enjoy it while it lasts. Wow, what a weird thing to say. I shall head back. I feel relieved to see that it wasn't Big G's doing. However, unless he crosses the border, there will be no end to his antics. Since we are done with the matter at hand, can we resume our search for Big G? I believe that won't be needed. He found us first. Big G? I didn't mean to bother you. Any of you. This is Big G? He's just a child? Child. Oh, well, he is a spirit. It's quite normal that he looks just like he did when he left this world. That's not what Paimon imagined when Paimon first heard the name Big G. Let's bring him back to Wangsheng Funeral Parlor. We have much to do. रोटी खा ली तौरे से तब से चलाए रही है If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Fireworks are for now, but friends are forever.
Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. After all that's happened, Actually, I'm not surprised in the slightest. Remember what I said? There's only so many evil spirits in this world. It was a twist of fate that made him leave Wuwang Hill in the first place. Now, for some reason, he can't go back. this explanation sounds a bit far-fetched to Paimon. Actually, she pretty much summed it up. Huh? Don't ever question my professional instincts. I just wanted to check up on my friends. That's why I came to Liyue Harbor. I promise I wasn't up to any mischief. I never wanted to scare anyone. A few days ago, some people came to Wuwang Hill on a dare. I heard them saying they'd come from Liyue Harbor, so I followed one of them back and ended up here. Ah, it must have been poor Lo Chung that you followed. Maybe he didn't notice you, but he could still feel your presence. I was discovered? Well, I assume so, otherwise he wouldn't have been scared half to death. Yeah, Hu and Meng were searching for you all over the place. Oh, that's because I couldn't find them. It's my first time in Liyue Harbor, and I got lost in the city. Now that you mention it, Big G always had a poor sense of direction. When we were kids, he'd never go down the hill by himself. So, all of this was just because you got lost? Why didn't you just fly? Like any other ghost or spirit? Don't you think it's much easier to find your way from up above? I can't. It's too high for me. I'd get scared. That's right, yes! He used to be so afraid of heights that he wouldn't even so much as look down the hill. You haven't changed a bit. I knew I wasn't supposed to show myself to the living, and with so many people walking around Liyue Harbor, my only choice was to hide. I wouldn't have found you if it weren't for the Leyline Monolith's call. I'm so relieved that you haven't become an evil spirit. Like I said, don't ever doubt my professional instincts. Now, all we have to do is escort this lost child back to Wuwang Hill. But he just said he wanted to visit his friends. Apart from me, there's also Little Wu, Mumu, and Songze. Well, if that's the case, we can't let him down. We'll ask them all to help us prepare a farewell ceremony for Big G. Meng and I will escort Big G back to Wuwang Hill. You meet with those three and ask them for keepsakes to symbolize each one of them during the ritual, then come and find us. They're all friends. Can't we just go there all together? Or maybe we can take Big G to them. That's not a good idea. I don't want to scare them.
I wouldn't want ordinary folks to become superstitious, so be careful what you say when you collect the keepsakes. Are we really going with Hu Tao's plan? At least by keeping things low-key, we won't be giving anyone nightmares. कुछ क्राफ्ट कर सकता हूँ मैं, कुछ 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 क्राफ्ट कर सकते क्या? एक बार देख लूँ मेरे को कौन सा वेपन अपग्रेड करना है। मेरे को ये अपग्रेड करना है, तो 2 ये क्राफ्ट करने का है। नौ ये क्राफ्ट करना है और 11 ये क्राफ्ट करना है। Fireworks are for now, but friends are forever. ये तो सिर्फ 2 क्राफ्ट कर सकता हूँ मैं, तो सिर्फ 2। अच्छा, मैं इससे 10 क्राफ्ट इधर से कर सकता हूँ, उसके बाद इसकी संख्या भी बढ़ जाएगी क्राफ्ट करने के बाद। और ये सिर्फ मैं 1 क्राफ्ट कर सकता हूँ, पर इसको क्राफ्ट ही नहीं करना है अभी, मेरे को ये क्राफ्ट करना है। अच्छा, मैं इधर से खेल सकता हूँ, पर किसी को लेके खेलना पड़ेगा इधर, जिसका लेवल मेरे से ज़्यादा हो। यार कोई नहीं, पहले ये स्टोरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद किसी को बुलाएंगे, फिर मटेरियल इकट्ठा करते हैं। Hi! Do you remember us? Oh, you. Sorry, I won't be needing the funeral parlor's services anytime soon. Yes, we grew up together. We still keep in touch even now. I don't know why he started working for Wangsheng Funeral Parlor. To be honest, but he must have had his reasons. He's on his own now, after all. And he still can't get over what happened to Big G. Did he tell you about it? Yeah, he did. If you could pick one thing to give to Big G as a keepsake, well, just, theoretically speaking. We're just speaking. I'd cook something for him. Oh, he could eat spicy food like no other. His favorite meal was extra spicy Jueyun chili chicken. I can make it for you if you bring me some Jueyun chilies. I'm sure he'd appreciate the flavor of his childhood years. Deal! Just give us a minute. Jueyun chilies are a common sight in Liyue. Great, this should be enough. I'll get started on the Jueyun chili chicken. I guess you've got other folks to track. When everyone's ready, I'll get the dish over to you. Great! See you later! How did he know about the others?
adventure time! Not you again. I told you, I'm not interested in the inner workings of Wangsheng Funeral Parlor. Mom told us about you. You're good friends, right? That's true, yes. Come to think of it, I remember he did join Wangsheng Funeral Parlor recently. It didn't take long for his good friends to figure out why. The Big G incident. But I know there's nothing we can say to help him get over it. Letting go of the past is so... Is Big G the reason you're here to see me? How did you know? We didn't even say anything. I'm a businessman. I've got a sixth sense for this kind of thing. Everyone hears the name Moo Moo and thinks I must be dim-witted. Here, take this. It's a top-of-the-line toy box we all dreamed of owning as kids. Back then, none of us could afford it. We were penniless. Today, business is booming. Wow, you must be like super rich. For me, it's a memento of a childhood long gone. Without it, we wouldn't be where we are today. So, having found me, I guess you'll be looking for Little Wu and Songza next. Mm-hmm. We already saw Little Wu. Now we gotta find Songza. I see. If it's Songza you're after, let's meet at the overpass. I've got an errand to run. I'll come find you as soon as I'm done. Benny's adventure team, assemble! Off we go! You're all here. Reminiscing about old times, thinking back to past events. Our hometown was completely destroyed in a disaster, so we've got nowhere to go back to. They've just been telling me you're looking for keepsakes. I make artisan style lanterns down by Liyue Harbor. A few days ago, I bought some quality plastrite shards. I've already spoken to the manager. Could I ask you to retrieve them for me? Seems like you already know what's going on. Be back in a jiffy. Up and away. Hi, we're here to pick up the plastrite shards for Sansa. I think she mentioned it.
Yeah, the plastrite shards are over in that crate there. Please, help yourselves. Hey, who's that skulking around? Doesn't seem like they're here. Let's look someplace else. These look like what Sungza was talking about. Let's hit that. Rose wells up inside of me. My thanks to both of you. This looks like Okay, there we go. I wrote all 5 of our names inside the lantern. You know, during the annual lantern rite, no matter what the days may bring, whichever roads we choose to take, while this rite remains observed, each of us remains the same. As for the matter of Big G, the 3 of us have discussed amongst ourselves and agreed we won't press you on it. But if you get the chance, please let them know we're doing well. And that the things we once spoke of, they've all come to pass. Son of God न्यू न्यू तो नहीं है पर मेन स्टोरी ये होता हो गया वो सेपरेट स्टोरी है ना इन लोग की कैरेक्टरों की वो कर रहा था मैं वो गोस्ट कैरेक्टर जो है मतलब जिसके पास गोस्ट की पावर है ऐसा कुछ उसकी स्टोरी है ये तो हाँ मेरे लिए तो नहीं है उसी की है मतलब डीमंस की स्टोरी है इससे पहले तो मैं कर चुका हूँ अभी Adventure time. Off we go. ये होता Oh, you're back already? Sooner than I expected. You didn't go spilling the beans, did you, Paimon? Does Paimon look that unreliable to you?
I'm kidding. Anyway, looks like they were willing to hand over some keepsakes. It's like, nevertheless, when it comes to things like ghosts and ghouls, spirits and souls, one thing everyone knows is you never know what to expect. Which explains why they were reluctant to pry and find out the full story. Which is just as well, because if they had attempted to, it would have been too much for me to deal with. Guard the border between life and death. This is Wangsheng Funeral Parlor's most important responsibility, and I'm stricter than most. तुम कौन से डिवाइस पे खेल रहे हो? iPad है मेरे पास, iPad mini 5. So what about us? Does it matter if we cross the border? Of course not. After all, you were caught up in all this already, just like Meng. And where we're going, don't be surprised at what you may see or what may occur. All of it exists within the border between the living and the dead. An ordinary place, really. But whatever you do, don't get all worked up over nothing, okay? Or else by the time we're out, I'll have to erase your memories. So listen to everything I say. Let's go. I'm scared. But like Huta says, we're already caught up in this. We better see it through to the end. क्रैश हो रहा है मेरा भी गेम खुद का. क्या कर सकते हैं. अभी तक कोई कैरेक्टर भी मैं बिल्ड नहीं कर पाया ढंग से. आईपैड वैसे भी पुराना हो चुका है. हाँ, अभी इसके साथ खेलना पड़ेगा. ये वेपन बड़ा फेमस है इसका. Underworld from the tales of old. This is just a place where the ley lines tend to go a little bit haywire. So keep your cool. Follow me. The farewell ceremony site is just up ahead. इसने तो अपना हेल्थ कम कर लिया. ये क्या सीन है इसका. That pattern looks familiar. From the right angle, you can make out the whole thing. Oh, just like last time. कोई ना. बिल्ड में मतलब वैसे कितने बिल्ड करेंगे. जैसे मेरे पास मटेरियल ही नहीं है जिनसे बिल्ड होगा. मैं भी एजू है मेरे पास. एजू इसको बिल्ड करना है मेरे को. ये तो अपने बस्ट पे अपना हेल्थ लेके जा रही है खुद का ही. बैनिट से इनका हेल्थ लेना पड़ेगा रिकवर. That's why it's named the border. You can't just cross whenever you please. You need to have a little, how do people normally put it, pomp and ceremony? इसके लिए बैनिट सही है सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हेल्थ बड़ी जल्दी करता है. बैनिट बब भी कर देता है. बैनिट का पहले एचपी फुल मतलब बस्ट फुल करना पड़ेगा. एजू भी तो है मेरे पास. एजू भी तोड़ता बड़ा खतरनाक है.
कोई बिल्ड नहीं है मेरा, फिर भी एजू तो मार ही रहा है। नौ 9,000 का डैमेज देता है ये भी अपने बस्ट पे। ये क्या गूगल का खुल रहा है? 1 मिनट रुको जरा, मेरे को रिस्टार्ट करने दो मेरा स्ट्रीम को। ये गूगल अपने आप ही खुल जाता है इसके अंदर, पता नहीं क्या है बात पे। फर्स्ट बिल्ड DPS 50% एंड वन सपोर्ट 20% बिल्ड। कैन आई ज्वाइन? अरे भी वो स्टोरी कर रहा हूँ ना, तो अभी रुक जाओ, उसके बाद तो ज्वाइन करना ही है। ये खुलना चाहिए था। By the way, I imagine Adventurers Guild members are good at making order of things. See if you can find a way to get the right things into the right places. Usually it requires a bit of destruction as well as elemental reactions. On your marks. You talking that? हेजू को और इसको बिल्ड करना है, योमिया को। दो ही है मेरे पास ऐसे कैरेक्टर। और कोई कैरेक्टर भी मेरे को मिला ही नहीं है। बैनेट सपोर्ट के लिए हेजू तो अपना मारेगा ही। इसका हेल्थ अपने आप जाने का मतलब क्या सीन है? इसको यूज करने से पहले हमेशा इसको बिल्डिंग मतलब इसका वो करना पड़ेगा सीन सेट। Bring it on! Fire hazard! Teamwork is dreamwork. God's over. Keep moving! Fracture! Hey! The truth! पिट गया मैं।
वैनिटी सही काम कर रहा है, सिर्फ अपने रोल में वैनिटी सही है। ये तो मिल जाए, ये तो खतरे का खेल है, इसका जब हेल्थ ही जाता रहता खुद ही। मेरे को तो नहीं मिलनी चाहिए, अच्छी बात है फिर तो। फाइट करते करते हेल्थ जाएगी इसकी तो। This looks the same, but there aren't enough. So confusing. Let's have a look around. Or up ahead. Go! Huh? पर हर स्टोरी में तो सबके साथ खेलने को मिलता है। गानियों के साथ थोड़ा कम खेलने को मिला है। उसकी स्टोरी में खेला हूँ बेबी जस्ट। उसको शुरू में ट्रेनिंग करने के लिए बस मिलती है और कुछ नहीं। मेगा सीन है। हमको इधर आना ही नहीं था गए ऊपर, क्योंकि चढ़ तो सकते नहीं इसके अंदर। एक मिनट, क्या सीन है इसका? अच्छा इधर से आए थे उधर ही चले गए वापस। हाँ ये कैसे होगा? ये तो गोल गोल घुमा रहा है मेरे को। Huh? Isn't this where we just were before? Nice and spicy. तो सेम चीज़ तो कर रहे हैं हम लोग। कुछ और सीन है इधर।
सेम चीज़ है वापस से। किसी ने कर रखा है इसमें, क्या सीन चल रहा है? वही चीज़ वापस तो आ रही है। वही सेम चीज़। What into that is going on? Have we even been moving forward this whole time? It's almost as if we're constantly being sent back to the beginning. Everything resets. क्या हो रहा है इधर? ऐसे जो हम इधर कर रहे हैं ना, उसको दूसरी साइड लगाने का है। We're stuck. The spirits have trapped us. Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? Fracture. Huh? Go! करना क्या है इसमें? करना क्या है? We're stuck! The spirits have trapped us! Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times?
हाँ, एक काम कर सकता हूँ मैं। मैं इसको इस पे लगाता ही नहीं ना, क्योंकि तो वो तो रिस्टार्ट ही होगा, तो मैं इसका यूज़ करूँगा नहीं और मैं उधर जा के भी वापस आ जाऊँगा, ऐसा कुछ सीन है। इसका यूज़ नहीं करूँगा मैं इस बार। साथ में रहेगा तो वैसे भी 2 तो मिल ही जाएगा तुरंत ही। ये करना है ना। अबे कहाँ फंस गया मैं। यही करना होगा, बस गायब ना हो जाए मेरे पास से। यही करना ही था, क्योंकि रिस्टार्ट तो ऐसे ही होना है। इसको मिल गया दो। We're stuck. The spirits have trapped us. Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you said... Finally! Paimon thought we weren't going to be trapped in that weird place forever. That's exactly the point. Trespassers end up running scared. So that's the weird stuff out of the way, right? Yep. Just dive off the edge here. अभी ये क्या है, एक चीज से छुटकारा मिला। किधर जाने का है? नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, मेरे को लग रहा है। नीचे नहीं जाना था ना इसमें। अच्छा नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है। Red sir. Welcome to the farewell ceremony site. Our destination is just up ahead. I know you're excited, so feel free to have a look around and talk amongst yourselves. Soon you'll find out there's nothing special about this place. इधर तो सारी स्पिरिट ही है, सिर्फ स्पिरिट। It's the lantern rite again. Wouldn't it be cool if we got to see the lanterns ourselves one day? You can make a wish without a lantern, you know. My mom told me. As long as you yell it really loud, your wish will come true in the future. Yell it? Isn't that kinda embarrassing? As soon as the first person yells, and everyone else just joins in, and nobody feels embarrassed anymore. That's right. Little Wu, you start. Alright, I wish I could open a massive restaurant with never-ending dishes and snacks. So, That's your wish? if that's so funny, what's your wish? To get rich, of course. Do big business and make a load of Mora. With Mora, you can do whatever you want and be happy. Yeah, if you get rich, you can buy that super expensive toy box. Not just one. One for everyone. No, loads for everyone.
Well, if Momo's gonna be a businessman, then I don't need to earn any money. Whoa, 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 it's tough getting rich. Don't put all the pressure on me. As for me, I want to learn to make Ming Xiao lanterns. The big kind! And Xiao lanterns, too. I'll be the... Yeah! That way we don't need to go to Liyue Harbor to release Xiao lanterns. Anyway, those are our wishes. Mung, Big G, what about you? Me? Huh? They all disappeared. Right when he was about to make his wish. It brings back so many memories. That was the last lantern ride the 5 of us spent together. It's been so long. Everyone's all grown up. Have all those wishes really come true? We asked each of them for parting gifts for you. Little Wu's become a chef. Momo's a successful businessman. And Zongza makes great shell lanterns. Really? Wow. We've never forgotten our childhood dreams. Anyway, time to release this lantern. Hey, take a hint. Let's give them some space to go over the good old days. Take the hint? Monk's already crossed the border. That's the only way to send Big G off. As I explained, Wangsheng Funeral Parlor was once upon a time more akin to a doctor's office than an actual funeral parlor. During the Archon War, piles of corpses covered the wilderness. People were plunged into misery and suffering. Disease was spreading all over the land. Death devastated the world of the living. Such were the times when the Wangsheng Funeral Parlor was first established. They must have paid a huge price for that. After generations, Liyue Harbor became a bustling hub of prosperity, luring people with dreams of great fame and abundant mora. By that I mean the remnants of the defeated gods that ravaged the world. I won't go into specifics of that situation, but suffice to say that at its peak, life was on the verge of bringing about its own extinction. It took a long, long time, longer than you'd think, to restore balance and reinstate the border. Without it, Liyue Harbor as we know it wouldn't be here today. Neither would the Wangsheng Funeral Parlor, you or me. The previous directors all love to tell this one too, although, if you ask me, I think I tell it best. What you make of my words is up to you. I do hope that most of it flew over your heads, though. The Wangsheng Funeral Parlor is just that, a funeral parlor. Nothing more to it. We live in peaceful times, but this harmonious coexistence between life and death should never be taken for granted. Huh? It's about time. Let's go. Let's take them to the place where all begins. What kind of place is that? I just mean where we first bumped into each other. I come up with fun names for things sometimes, okay? चीची चाहिए मेरे को, चीची मोना या दो में से एक चाहिए मेरे को सिर्फ। एक कैरेक्टर मिला है मेरे को भी, अगर मैं विश करता हूँ मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को पता है। 2 वेपन 3 4
23 विशेष है जोंगली के लिए। देखते निकलता भी है क्या जोंगली, पता नहीं। सब मुश्किल है निकलना क्योंकि मेरा यूमिया निकल चुकी है, अभी रिसेंट में निकली है। ये देख सकता है कोई भी, ये निकल रखी है यूमिया 5 स्टार। इसके बाद मैं सिर्फ एक विश किया हूँ इस पर, जिसमें स्वॉर्ड मिल रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। I think we did everything we could to make you happy, Big G, wouldn't you say? But if you ever really do become an evil spirit and come back with more nefarious nonsense in mind, I may have to forget our friendship and give you a far less fond farewell. I won't, I promise. I'm grateful for everything you've done for me. Now that I know that my friends are doing so well, I have no intention to bother them. I also want to thank you. You made my dream come true too. So you should also mind my warning, Mung. If you won't let go of the past, I might reunite you two sooner than you think. How can you say such horrendous things with that smile on your face? Well then, last but not least, let's say our goodbyes to Big G. See you later, Big G. Not like that. You won't be seeing him later. Let's stick to goodbye and such. No worries. I'll just take my leave. I'm sorry. Of all the wishes we yelled that day, only ours hasn't come true. Nah, don't be bothered by that. No life is without its regrets. You can leave in peace now. All right. I'll remember you all. Goodbye. He's gone then. I thought that closure would bring me relief, but all I can feel now is... So, what was the wish you two made? We didn't have a chance to hear it earlier. Well, after each of us has started a family and built a career, that's why I envy my friends so much. Little Wu and the rest, they all had a chance to fulfill their wishes. Mine, however, will remain just a dream. That's right. Also, think about this. Everyone gets burned to ash one day. So enjoy your life while you can, and when your duty to the living is over, you can meet whoever you want again in the afterlife. Isn't that great? Thank you? मरने के बाद मिलने के लिए I don't बोलते think हैं। I'll ever return to Wuwang Hill. I have a lot of feelings to process. No worries. It's a good opportunity for you to go on vacation. Consider your leave approved. Naturally, this doesn't change the terms of our previous agreement. The leave will be unpaid. Aren't you forgetting about something? I took you to the border and let you have a look around, didn't I? But based on your reaction, it seems like you didn't find what you're looking for. It is a pity indeed. The biggest pity of all is your lack of help. I was fishing around on your behalf through the channels that aren't accessible to you. Unfortunately, I didn't find any leads worth pursuing either. I'll keep my eyes open in case anything crops up. If so, I'll be sure to let you know. You don't sound like you mean it. I'm not an expert on tracking down the living. However, if you want me to summon someone from the other side of the border... Stop saying creepy stuff. Relax. I'll help you look for them. You have my word. My exquisite sense of humor always goes unappreciated. I have my reasons. Reasons?
The spirits we saw near the border are the dead that still long for the world of the living. But I've never seen any of the previous directors there, not even once. This means that becoming the director of Wangsheng Funeral Parlor was the right decision for them. कंप्लीट हो गया ये भी. $60 प्रीमोजेंस. और क्या कुछ मिला और अच्छा? Ooh, will we find any firework materials in here? ये दोनों लॉक है. इज कंप्लीट. इनको हम खेल ही नहीं सकते किसी को भी. की नहीं है अपने पास की. हम इसके मतलब इसकी स्टोरी भी नहीं कर सकते अभी. इसकी भी नहीं कर सकते. निंगवांग की भी नहीं कर सकते. 2 की चाहिए इसके लिए. इसकी भी नहीं कर सकते. ये तो अनलॉक है ना. गोरो इस पे लॉक नहीं है. फिर इस पे क्यों दिखा रहा है लॉक? इस पे लॉक नहीं है तो लॉक क्या दिखा रहा है? मैं भी क्या बोल रहा हूँ. बैनिट. ये 2 अनलॉक है पर इनको खेल क्यों नहीं सकता मैं? इसने ऐसा क्या दे रख. ये लोग कुछ भी मांग लेते क्या मेरे को? वो समझ रखे क्या? नौकर होकर अबे चाहिए क्या तेरे को? कुछ तो बता. बना के आता हूँ सब कुछ. तो चाहिए इसको. उसके लिए मेरे से इतना मेहनत करवाने वाली है क्या? इधर कुक कर सकता हूँ ना मैं इधर की तरफ पे. ये रहा. इसके साथ बोनस है. एक और बना दे फिर. इन सब के लिए इतना मटेरियल चाहिए और इनमें से कुछ मांग रही होगी ना. उसको कद्दू दिया जाएगा. कद्दू
ये लेके चलते, इससे होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। हटाओ इसको। तो क्या हुआ? तो चार्जर खरीद के दे दे, नहीं लगा के रखूँगा। तो फिर मत बोला कर। स्ट्रीम कर रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। फिर क्यों? तो 100 बार बोला एक चीज़ नहीं दिला पाती तो मत बोला कर मेरे को कुछ भी। हाँ तो ले लूँगा अपने आप ही। Adventure time! Off we go!
fracture! Out of the frying pan, into the fire! Be careful not to mix up the explosives in the ice cream juice. It doesn't rhyme this way.
Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. MKL हर कोई मेरे को पीट ही रहा है इधर पे पकड़ के कैसे ही तैसे। ऐसा ग्लू बस में बहुत सारे लोग हैं इधर पे। मेरा कैरेक्टर बिल्ड नहीं हो रखा ना, इसकी वजह से ऐसी की तैसी हो रही है बस। हाँ कोई भी मेरे को मार दे रहा है कि कोई भी, उनका लेवल मेरे से ऊपर है सबका, ऐसा सीन है। मेरा लेवल खुद का 80 है, 80 बोल लो, 80 तो मेरा खुद का भी नहीं जितना अपोनेंट का है। मेरा तो खुद का लेवल 60 है। अब का वर्ल्ड कम कर लो फिर, मतलब कम लेवल कर लूँगा तो पर रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे ना अच्छे। फिर मेरे को मना किया है किसी ने कि कम मत करना इसका लेवल, नहीं तो रिवॉर्ड मिलते वो नहीं मिलेंगे। और इनके इतने से डैमेज से मैं मर जाता हूँ, इनको डैमेज तक नहीं बढ़ रहा है क्या मतलब बनता है। मेरे को 5 स्टार मटेरियल नहीं मिलेगा अगर मैं कम कर लेता हूँ लेवल तो ऐसा। ये किधर पहुंची? अबे मॉन्स्टर के पास क्यों आ गया मैं घूम फिर के? इधर का भी सीन खराब ही है थोड़ा, क्या बहुत ज़्यादा खराब है। तो फिर फोन करो, स्टार्ट करो, वेट करो। पर वही मेरे को मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छे हो चाहिए थोड़े पार्टनर चाहिए थोड़े बहुत, इनसे ये सब ले सकते ना फिर फाइट करके जाके। ये मटेरियल्स की ज़रूरत है, पर कोई अभी है ही नहीं खेलने के लिए साथ में। मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी मेरे को ऐसे डैमेज दे के ख़त्म कर दे रहा है। बगले नीचे मत जा, पगली मर जाएगी। मर गया मैं भगते हुए भी इतना डैमेज खा रहा हूँ ना, क्या बताऊँ मैं तो भगने में। पीछा मत छोड़ना तुम लोग।
मैं ये स्टोन इकट्ठा कर रहा हूँ। कल कब आओगे? सेम टाइम नहीं, कल लाइव स्ट्रीम नहीं होगा। संडे लाइव स्ट्रीम बंद रहता, मैं ऑफलाइन थोड़ा खेलता हूँ बस। मंडे से वापस से लाइव स्ट्रीम होगा, संडे छोड़ के बाकी हर दिन लाइव स्ट्रीम होता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, टूटता भी नहीं है। तो कितना एक को मारने, मतलब एक को तोड़ने के लिए कितना करना पड़ रहा है। तो ये मटेरियल चाहिए मेरे को, गन बोलता हूँ, वेपन क्राफ्ट करना है इससे। थ्री 3.0 कब आ रहा है इसका अपडेट? जोंगली चाहिए अपने को, सील्ड वाला कोई कैरेक्टर अच्छा है नहीं। नोबल है पर वो अटैक में थोड़ी वैसी है, क्योंकि इधर बॉस घूम रहा है फिर तो। ठीक है ठीक है। मेरे को हेजो बिल्ड करना है, सीधी बात है। हेजो हो गया, हेजो भी बहुत अच्छा ही मारता है। हेजो को मैं ये वेपन दे रखा हूँ, वे तो दिखाऊँ। ये रहा हेजो का वेपन, क्रिएट वाला वेपन है जो मैं किली को दे रखा था, वो हेजो को दे दिया मैंने उठा के। तो इसके भी आर्टिफैक्ट फार्म करने हैं, ये क्या करना है मेरे को ये पता नहीं है। हाँ तो पहले इसको हेजू को करते हैं, मतलब बिल्ड। हेजू मतलब अच्छा कैरेक्टर है, मेरे को तो अच्छा ही लगता है। 5 स्टार, मतलब 5 स्टार आर्टिफैक्ट्स रहेंगे जो भी, उनको फार्म करना है। और ये डैमेज भी बहुत अच्छा ही देता है। अगर तुम्हारे पास 5 स्टार कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है अभी, मैं तो ये लेके पछता रहा हूँ अभी, सीधी बात है। मेरे को जोंगली के लिए जाना था पर मैं ये पुल कर लिया, क्योंकि मेरे पास पहले से किली पड़ी हुई है। किली है देखो, पहले से ही है ये, तो क्या कहता है, दूसरा कैरेक्टर नहीं चाहिए था मेरे को। यहाँ पे मैं गलती किया हूँ। ठीक है, डीपीएस दोनों की दोनों ही है, किली और योमिया। हाँ भाई, मतलब मेरे को डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो तुम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है देखो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो और बताना फिर मेरे को वॉइस चैट, मतलब वॉइस चैट पे आके। हेजो को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ भाई।
जोंगली के ले जाओ भाई, पुल करने के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जोइन हूँ पहले से ही। हाँ तो वॉइस चैट कर सकते हैं ना, उससे बात करके तुम बता दो क्या क्या ज़रूरी है। अभी देखो मेरे पास 5 क्या क्या है इसके लिए। ये सब तो मैं ऐसे ही लगा रखा हूँ, मुझे पता नहीं इसमें क्या चलेगा, क्या सीन है इसका। पर इसको ही सबसे पहले बिल्ड करना है मेरे को भी, येजू को ही। एक 5 स्टार वेपन बस। Doing detective work means you gotta walk the walk. No, I mean literally. मेरे को I need to search मतलब high and इसके low साथ for खेलना बड़ा पसंद है। इसका फ्री स्टाइल है ना, वेपन नहीं दिखता, एंड टू एंड कॉम्बैट करता है, तो ये मस्त है इसके लिए। मैं फ्रेंड हूँ इन गेम। हाँ नाम बताना क्या नाम है, मैं भी बताता हूँ मेरे में कौन कौन फ्रेंड है भी। देखो नाम क्या है, नाम नाम हाँ ये तो रहा ना टॉप पे। ये स्कैर भी तो आ जाए नहीं। एट लेवल का है वर्ल्ड तुम्हारा, हमारा 6 लेवल का है। something in the air. Something that tells me. पहली बात तो कैरेक्टर के लेवल, मेरा इसका 65 अभी किया, मैं तो 60 पे था। ये फर्स्ट हूँ देखो, हाँ देखा मैं फर्स्ट हूँ तुम मेरी लिस्ट में टॉप पे। ये वेपन सही है ना इसके लिए भी, क्रिट रेट वाला। वेपन सही है नहीं सही है, वेपन के ऊपर पहले काम करना का है। कैरेक्टर वेपन विद आर्टिफैक्ट्स, तो इसको 80 लेवल तक करना है मेरे को। 80 लेवल तक ही हो पाएगा तभी तो। अभी 50 के बाद यार, 50 के बाद होता है ना 90 तक तो। मेरे को सिंचो भी चाहिए, सिंचो 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 सिंचो, हाँ दोनों का नाम मतलब बहुत नाम में कन्फ्यूजन है, मैं ज़्यादा देखा नहीं उसको अभी तक कैरेक्टर को कैसा है। बैनेट, हेजू, सिंचो और एक और कैरेक्टर जोंगली होगा तो अच्छी बात है। Oh, it's all coming out now. Doing detective work means you gotta walk the walk. No, I mean literally. उसका टैलेंट करो। टैलेंट में भी इसका देखता हूँ क्या करना है, क्या लगेगा मटेरियल। टैलेंट में भी पहले अपने को इस पे काम करना है, मिडल वाले पे। पर ये चाहिए हमको, और इसके लिए डीमन अवेलेबल नहीं है। इसको हम फार्म कर सकते हैं क्या? 1 मिनट, क्राफ्ट कर सकते हैं, फार्म बोलते हैं इसको। एक मिनट, क्राफ्ट कर सकते हैं इसको। ये था ना, 4 क्राफ्ट कर सकते हैं अभी।
हाँ कल होगा, कल शायद से। कौन सा? 1 मिनट, कौन से डे पे मिलते हैं ये को? संडे, संडे को मतलब इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। मेरे को पहले यही बिल्ड करना है, मतलब यही सही है मेरे लिए भी। इसके ऊपर फोकस करूँगा तो सही रहेगा। नॉर्मल अटैक भी कर दूँ, बराबरी पे रखो, क्योंकि इसको DBS ही बना के चलाऊँगा। बस आर्टिफैक्ट्स का मतलब झोल हो जाए सही। ये आर्टिफैक्ट्स क्रिट रेट है, लास्ट में इसको मैंने क्रिट डैमेज दे रखा है इसमें। इंक्रीज सेकंड वन फर्स्ट। अभी अपने पास वो नहीं है, कल होगा मटेरियल। कल सबसे पहले इसको ही अपग्रेड करूँगा। ये क्राफ्ट मतलब कर नहीं सकते भी, डीमन भी अवेलेबल नहीं है इसका। डीमन जो भी है वो इसको TBS बनाएंगे अपनी टीम का मेन। मेरे को शुरू से बंदा पसंद है, इसको ही करेंगे। ये सब तो बाद में होते रहेंगे, इन सब में बहुत टाइम लगेगा। ये फ्री टू प्ले है, मतलब आराम से मतलब खेल सकता हूँ इसके There's साथ में। something in the air. Something that tells me a new case is brewing. बैनेट का देखते हैं क्या है, इसको बैनेट को भी अपग्रेड करते हैं थोड़ा। इसका लास्ट टैलेंट। हाँ, इसके लिए कौन सी बुक चाहिए? अबे गेम ही क्रैश हो जाता है यार। गेम क्रैश हो गया मेरा। पहले फिर टैलेंट करते हैं, क्योंकि टैलेंट फिक्स अपग्रेड होता है, आर्टिफैक्ट्स लक पर डिपेंड होता करता है। अच्छा ऐसा क्या? पर इम्पोर्टेंट तो दोनों ही है फिर तो। बैनिट का भी करते हैं ये अपग्रेड। कौन सी बुक थी इसकी? लगता है इसकी बुक ही नहीं है मेरे पास काम करने के लिए। नहीं है, इसकी बुक ही नहीं है। इसको 1 क्राफ्ट कर सकते हैं, इसको 3 क्राफ्ट कर सकते हैं, इसको 10। मेरे को बहुत मटेरियल चाहिए अभी तो। इसको 11 क्राफ्ट कर सकते हैं, गोल्डन वाले को इसको 70। इस चीज़ की कमी तो नहीं है टैलेंट के लिए। इसको हाँ, टैलेंट इवन करते हैं पहले, और आर्टिफैक्ट्स भी तो थोड़ा मैटर करता है। इसमें क्रिट रेट और क्रिट डैमेज मैटर करता है।
मैं इधर से फार्म कर सकता हूँ, मेरे में ये अनलॉक हो चुका है अभी, पर फार्म क्या ही करूँगा मैं, मेरे पास 3 ही है सिर्फ ये। 3 ही है मेरे पास वो सीन। मैं ये कंप्लीट कर चुका हूँ पूरा रिवॉर्ड, मैं ये भी कंप्लीट कर चुका हूँ। ये भी कंप्लीट कर चुका हूँ, ये भी कंप्लीट कर चुका हूँ। हाँ, ये कंप्लीट होगा ही नहीं अभी मेरे से। इसके लिए तो पापड़ बेलने मेरे को पहले अपने कैरेक्टरों को मतलब बिल्ड करना है। और रही बात इसकी टीम दिखाता हूँ मैं क्या है, तगड़ी सी। ये देखो, इसको साथ पहली तो ये है मेड नोवल, और इसका ये जो वेपन है ये भी मेरे पास है। ये देखो, ये वेपन है और ये मेड है। मेड तो बोलते क्या, और ये और सब भी C0 पे। इधर से देखो, इसको डिफेंस के ऊपर है ये। इधर से इसका डिफेंस 2458 है। डिफेंस के लिए इसको दे रखा है इन लोगों ने। इस पर डिफेंस भी है, अटैक। 1 मिनट, देखो क्रिट रेट इसका कितना है, क्रिट डैमेज कितना है। मेन इम्पोर्टेंट क्रिट रेट होता है, हिट करने की पॉसिबिलिटी, मतलब क्या बोलते हैं, एनिमी को डैमेज देने की वो कितने चांसेस है उससे पता चलता है। और इसमें इसका क्रिट रेट कम है क्योंकि इसको डिफेंस के लिए यूज़ किया गया है। इसका भी क्रिट रेट मेरे को इतना मेंटेन करके रखना है, कैसे रखेंगे पता नहीं। और ये इसके आर्टिफैक्ट्स, ये आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे कैसे मेरे को तो ये भी नहीं पता। मैंने तो अभी इनमें से एक आर्टिफैक्ट्स भी नहीं देखा है। जो कैरेक्टर आता है इधर उसके आर्टिफैक्ट्स सब है। Leave it all to me. Out of the frying pan, into the fuse is lit. उसके बाद इसका डैमेज कितना है। As a good night show. Eat this. Go bishop down. Fire hazard. Time to clean up. I must leave no stone unturned. Here come the fireworks. Hey, yeah. Booba, get them. As a good night show. ये भी तगड़ी तो है सीडले के लिए, बल्कि इसका C0 इतना तगड़ा है। ये सबका C0 है। और सभी अपग्रेड होंगे 80 लेवल तक। सब 80 लेवल पे इतना गंदा मारते हैं।
पर इनके पास आर्टिफैक्ट्स सही हैं, इनकी टैलेंट फुल है इनमें, ये टैलेंट फुल है सबके। या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये आईडी छोड़ के नई आईडी बनाऊँ और शुरू से सिर्फ मतलब 4 कैरेक्टर लेके चलूँ, सिर्फ उन्हीं को सबको बिल्ड करूँ, ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि अभी मेरा वर्ल्ड का लेवल 6 है, जिसमें 83 लेवल के तो मेरे में बहुत सी साथ मतलब वो आते हैं, जितने नॉर्मल एनिमी भी हैं 83 से ऊपर ही हैं सब, और मेरा खुद का लेवल अभी 65 60 70, क्या मतलब। इसको डैमेज के लिए नहीं बनाया, डैमेज के लिए इसको है। ये 2 सपोर्टर, एक डीजीएस। पंद्रह 1000 से ऊपर ही डैमेज दे रही हो। इसका भी डैमेज सही है, ये देखो इधर खत्म खत्म खत्म। 18,000। और इसके बाद वो भी दूसरा है। कल का दिन सिर्फ टैलेंट को अपग्रेड करने में लगाऊंगा, सबका देखूंगा जो जो से जिस दिन पे मिलेंगे सब 4 कैरेक्टर को पकड़ो, उनका टैलेंट अप करो। और कुछ नहीं रह जाएगा। टैलेंट अप, लेवल अपग्रेड। Leave it all to me. Observe. Unleash. Time to clean up. Your grand finale. As a good knight should. Someone needs assistance. Steady as stone. Strike is one. Observe. As a dutiful maid would. Break a leg. Unleash. I'll catch up. As a good knight should.
Your grand finale! And step. As a dutiful maid would. Benny's adventure. Let's go find some treasure.
Annie's adventure team, assemble! Booba, get them! My intuition tells me that something very interesting is... ये जो मजा आके चढ़ ही नहीं पा रहा मैं तो इसके ऊपर। ऊपर जाने का ऑप्शन दिया क्यों नहीं उधर पे?
मैं वहाँ तक उड़ के भी नहीं जा सकता। काय बात का है, इधर चढ़ने का ऑप्शन है क्या किधर से? I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest? इधर मेरे को कम से कम 4-5 स्टार की हो चाहिए मेरे को इधर से। बेनिट है पर कुछ उखाड़ नहीं पाएगा हम लोग। इसको ले रखा हूँ, ये मारेगा बे। बे कौन सा आ गया नया प्राणी आगे। बेनिट को पुल करते हैं, इसका इसकी ज़रूरत पड़ेगी। खत्म हो जाएगा। मैं नहीं तो 2 को डिफीट करना है। वो तो खुद ही मर गया। कोई नहीं कोई नहीं। Let's light it up. Everybody stand back. Get moving. Wind structure. थोड़ा डैमेज मैं भी दे दूँ। Adorn my knife. रुक जाओ। Going in. हिट नहीं होगा क्या? Bring it on. Teamwork is dreamwork. 12,000 लास्ट में मैं मारा हूँ। ये क्यों कर रहे हो तुम तो? आर्टिफैक्ट्स। अरे मैं सोच रहा हूँ कुछ करने को बचा ही नहीं है अभी। तो तुम इतना लेट भी आए, मेरे को पता ही नहीं क्या करूँ मैं इसमें बैठ के। तो आर्टिफैक्ट सोच रहा हूँ इकट्ठा करूँ, ऐसे ही होते रहेंगे कुछ तो। मैं इतनी देर से वेट कर रहा, कोई आ ही नहीं रहे। ये देखो ये मिला मेरे को डिफेंस। डिफेंस क्या ही कहूँगा मैं।
डिफेंस चाहिए, अटैक है, अटैक डिफेंस। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं 20 उसमें से। यही मिलता है डिस्कॉर्ड। आ रहा हूँ डिस्कॉर्ड पे, एक मिनट। मैं हेजू को बिल्ड करना चाहता हूँ। हेजू को मैं उन लोग पे जा के थक गया हूँ। अरे अगर आर्टिफैक्ट फार्म कर ला ना जो योमिया का है वाला फार्म कर लिए, इसका तो तुम्हें जरूरत नहीं यार। ये लोग अरे तो मेरे को वही तो बोल रहा हूँ, कोई बताने के लिए है ही नहीं। मैं कब से मतलब इतनी देर से स्ट्रीम कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं। किससे पूछूं, क्या पूछूं? मुझे एक बार देखा मैंने, अरे खोला था हमने शायद ओपन की होगी। मैंने देख रहा हूँ तुम ये फार्म भी करना चालू कर। मैं हेजू को भी साथ में बिल्ड करना चाहता हूँ। हेजू है और वो को बिल्ड करना है और तुमको बताता हूँ। हाँ ना, क्योंकि ये मेरे को शुरू से ही पसंद है। जब से निकला है तब से इसको बिल्ड करने के लिए मैं इधर से तड़प रहा हूँ। सही कैरेक्टर बहुत अच्छा है। कैरेक्टर तुम टीपीएफ भी कर सकते हो 5 स्टार होने के बाद भी। हेजू मेरे पास C1 है और यूनजिन मेरे पास C4 है। अरे पता मैंने 160 कुछ किए थे तब मेरे को कागज़ों में ना, और एक हेजू मिला भाई, दिमाग खराब हो गया। क्या मिला? एक हेजू मिला था 160। मेरे को 2 हेजू लगातार मिले थे बैक टू बैक। एक हेजू मिला था पूरा 160 गोल करने से। हाँ मेरे को तो बैक टू बैक मिले थे, मेरे को पता भी नहीं था तब तो। अरे ये इंजुमा में तुम यहाँ पे आओ। ये इसका फॉर्म, इसका तो योमिया का। कहाँ पे? इंजुमा में आओ, दिख गया मैं टेलीपोर्ट कर लिया हूँ। मेरा लेवल की वजह से मैं पिट रहा हूँ, मैं इसीलिए इरिटेट हो गया। बिना सुनो, बिल्ड किसी को मत करो, बिल्ड किसी योमिया को करो बस। बाकी सबको बिल्ड मत करना, मतलब आर्टिफैक्ट खाली योमिया का भी फार्म करो, किसी का भी फार्म करो। क्योंकि आर्टिफैक्ट ऐसा चीज है ना, तुम साल भर भी फार्म करोगे तब भी तुमको अच्छा आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा कुछ। ऐसा क्या? ऐसा है, इसलिए पता है मैंने सिर्फ अभी तक आर्टिफैक्ट सिर्फ इसका आया का था बस फार्म किया है बस। और उसका फार्म किया था काजुआ का। काजुआ क्या फार्म किया था मैंने? ट्रैवलर को जैसे ट्रैवलर बना रखा वैसे बना रखा था। वैसे ट्रैवलर को बना रखा था तो वही फार्म कर लिया था ट्रैवलर का बस। और किसी आ गया फार्म नहीं किया। अब तक क्या किया, खाली कैरेक्टर को लेवल अप और उसका टैलेंट अप किया हूँ। अरे मैं उसमें भी स्टोरी में देख रहा था। कितना भी रीजन डाल तो कम ही रहता, उसके कुछ मिलता ही नहीं। क्रिएट रेट जब फार्म किया करो तो कंडेंस बेसिंग यूज किया करो, तभी कुछ अच्छे आर्टिफैक्ट मिलने के चांस रहते हैं। हाँ मैं 90 वाला वही जो होता है। करना है ना, यही फार्म करो बस, ये वाला डोमेन, और कोई डोमेन करना भी नहीं आर्टिफैक्ट। अच्छा बस फिलहाल पहले तुम अपना टैलेंट और वो क्या नाम है लेवल बढ़ाओ। हाँ वो उसके लिए तो क्या नाम है तुम्हारे वेपन्स के? नारो में इसका फुल कर लूँ तो भी एजू। हाँ एजू को भी देंगे, एजू के लिए पता नहीं कहाँ से लेकर आऊँ कर रहे। मेरे को एजू शुरू से ही बिल्ड करना था। आर्टिफैक्ट से मतलब नहीं, मेरे पास उसका वेपन दे रखा हूँ क्रिएट रेट वाला। मैं फार्म नहीं कर रहा था, मैं आर्टिफैक्ट बस ढूंढ के वो बताओ वो क्या बोलते हैं, मर गया तो मैं मरेगा ये। मतलब मैं सोच रहा था कोई सा भी आर्टिफैक्ट हो उससे तो बनेगा ही ना कुछ तो। इसको भी नहीं कहूंगा मैं तो अगर योमिया को लेवल करो, पूरा 80 ले जाओ, उसका वेपन भी 80 ले जाओ। हाँ वो वेपन के लिए वो जो होता है क्या नाम है, दिन वाला सीन ना। अरे मटेरियल ही तो नहीं मिलता है। नहीं मटेरियल नहीं है।
क्या चीज? मेरे पास तो पहली बात तो बुक ही नहीं है उसको अपग्रेड करने के लिए। ये देखो पता है रेसिंग को सेव करो ना, यूज मत करो, रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा वो नहीं उससे मैं यूज़ नहीं किया इसको तो मैं जितने मेरे पे सबको 90 करके फुल लेवल अप कर देता, अच्छा खासा देता। नहीं यूज़ नहीं किया, कल मैं यूज़ किया था बस। दिन में मैं तभी आता हूँ, बस क्या नाम है जब रेसिंग कलेक्ट हो जाता है और सीधे सीधे एक बार में सारा खत्म कर देता हूँ रेसिंग। ये देखो 69 अभी तो मेरे पास, ये आज का दिन का 69 है ना ये ऊपर। नहीं अभी वो नहीं है, दिखाता हूँ मेरे को वेपन का देख लेते हैं इसका। वेपन इम्पोर्टेंट है अभी तो नहीं, वेपन का नहीं है। चलो चलो इधर टेलीपोर्ट करो, मैं देखा ही नहीं इसका वेपन का है। चलो अरे है तो करो, चलो इसको चलो। इसका वेपन ही तो इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार वो। वहीं स्टार्ट कर दो, मैं आ जाऊंगा। इसका सब इम्पोर्टेंट है फिलहाल अभी तुम्हारा, तो लेवल अप करो, लेवल करो, वेपन को भाई रेस्ट लगाओ, ये रेस्ट का मेरे पास वो नहीं है ना। 66 की हो गई है। 66 लेवल पे उसके बाद भी तुम अगर आगे बढ़ अरे उसके लिए मेरे पास बुक्स ही नहीं है। रेस्ट मेरे पास रेस्ट के लिए कुछ वो नहीं है तो उसको मैं दे नहीं रहा। वेपन दिखाना उसका जरा पैसे दिखो। किसका? मेरे को दिखाना। बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए तो। क्या है, कितना लेवल देता है? बाहर जाऊंगा, इधर से दिखा सकते हैं। आ जाओ ना। ये देखो इसका नहीं, इसका ये देखो एमोजबो का ये है, इंक्रीजिंग नॉर्मल एंड अटैक डैमेज 12%। My intuition tells me that something very interesting is about to happen. 8 25 40 40 12 40 12 हो गया तुम्हारा 52% दे रहा है नॉर्मल अटैक पे, और तुम्हारे पास ऑलरेडी वो है कि रस्ट का रस्ट ऑलरेडी 50 दे रहा है। तो कौन सा बो लगाना चाहिए? किसको डेवलप कर दो, ये लगाओ यही ना, क्योंकि बेस अटैक और वो बेटर है, बेस अटैक और अटैक परसेंटेज है वही दोनों में तो डिफरेंस है। There's something in the air. ये देखो रस्ट Something tells me a new case is brewing. कम है अभी तो। वही बेटर है, वही लगाओ, वही यूज करो। देखो रस्ट का इतना जल्दी रिफाइनमेंट मिलेगा, अभी रिफाइनमेंट इतनी जल्दी मिलेगा नहीं इसका, वही लगाओ। इसको डेवलप करो, जब रिफाइनमेंट मिल जाएगा तब यूज करना उसको। वही R5 हो जाए तब सही है। खुद आप आर तो 80% अप कर देता है नॉर्मल। और इसको तो मैं ये दे रखा हूँ हेजू को, क्रिट रेट वाला इसका वेपन, ये देखो। चलो ये कौन पीट रहा है? कोई नहीं आ रहे पीछे से। अब आ जाओ, बैनेट लगा लूँ मैं अपना। कर रहा हूँ लो, रेडी तो करें। मैं थोड़े मतलब वैसे वाले बंदों को देखता हूँ ना जिनके पास हेजू है, जो थोड़े दूसरी कंट्री के हैं।
भाई उनके पास एक छोड़ो है, उन लोग पूरा बिल्ड कर रहे हैं, उनके पास पूरा वो है आर्टिफैक्ट सेट है, तो आर्टिफैक्ट के फार्म करते करते उनका एक एक पंच मतलब इतना डैमेज देता है ना एक एक पंच ऐसी की तैसी कर देता है। मेरा भी 14,009 मतलब लेके जाता है अगर मैं होल्ड करके मारूँ अभी तो। पता नहीं रिएक्शन डैमेज होता है। वो यूज करने में आता है जिसको बिल्ड करने में जब बैनेट को यूज करता हूँ तब देता है उतना डैमेज। हाँ मेरे पे हेजू है और हेजू का वेपन भी है, और हेजू का सबसे अच्छी बात है तो क्या आर्टिफैक्ट मेरे पास डेवलप नहीं किया हूँ हेजू तुम्हारे पे भी है क्या पूरा का पूरा? जाओ तुम मेरा आगे कौन देखना देख पारो। हवा में ही रखूंगा मैं तो। दिन लगता है उसको डेवलप करने में। तो मैं एक ही कर रहा हूँ। ठीक है कुछ मत नहीं चीज मिला है, एक मिला था। एक मिनट मेरी प्रोफाइल बंद करो भैया, तो देखो पहले वो कर देना। इसको बुला रहे होंगे तो आ जा रही है। Doing detective work means you gotta walk the walk. No, I mean literally. You need to search high and low for evidence. आर्टिफैक्ट देखना। अरे मैं गया हुआ था, एक मिनट आ गया। इसको भी याद आ रहा है। किधर दिखाओ दिखाओ अपना दिखाओ किधर है। अरे वो फ्रेंड्स में जाओ ना। मैं सोचा इधर टीम के अंदर ही हूँ। हेजू कहाँ लगा रखा है? उसके लिए वो जाना पड़ता है ना चेंज करना। अरे अपडेट नहीं हुआ है ना, तो तुमको वो करना पड़ेगा, सिंगल जाना पड़ेगा पहले तब देख पाओगे। ये अलग गेम है इसका। किले चाहिए इसके अंदर भी तेरे सारे। ये लगा नहीं है जो ये पिंक का क्या इशू है? इतना 300 से ऊपर का देता है बल्कि इतना अच्छा नेट है। अभी BGMI ओपन करता हूँ तो 40 की पिंग आती है, ये गेम ओपन करता हूँ 300 की पिंग आती है। वही मेरा खुद 20 का आता है उसमें BGMI में पूरा 20 से इधर मिलता नहीं है इसके अंदर।
150 से नीचे नहीं आता है और उसके बाद ऊपर ही जाता है। इसका सर्वर सबसे नहीं जरूरत भी नहीं पड़ती। चेक करना जरा, अब दिखेगा। ये लेवल गया होता। इसे नहीं कर पा रहा। ये रहा ना क्रिट रेट क्रिट डैमेज, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट ही है। एनर्जी तो इसको चाहिए ही नहीं होती है। ये बढ़ाना सीखना मेरे को क्रिट। अब जो मैंने अभी अभी लेवल अप नहीं किया है, अभी लेवल अप नहीं किया है, तभी है 40 पे है। वही तो एनर्जी उतना नहीं ना, एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी का थोड़ी ना, वो तो मैंने भी देखा। ये तो वो है तो अभी वेपन को लेवल ऊपर हो जाएगा, 70 के ऊपर हो जाएगा। ये तो इसके अंदर का रॉयल पास है इसका ना वेपन। देखो जरा कितने लेवल पे है। एनर्जी कुछ नहीं है, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। एनर्जी के लिए मैं एक एनिमल क्यूब डाल दूंगा, इसके साथ काम पड़ेगा। 50 लेवल पे है, 17 क्रिट रेट है। अभी डबल अभी इसका क्रिट रेट डबल जाएगा। हाँ मैं अपना मैं अपना दिखाऊँ, देखो ये देखो मेरा, देखो सस्ता था। इसको लेने फायदा क्या है ना, क्या नाम है, जल्दी परचेज करते हैं क्योंकि रेजन तो मिलता नहीं इस गेम में उतना। ये देखो ये मेरा वेपन है। ये नहीं अभी करना भी हमारा हेल्थ ज्यादा लेवल मैं उतना किया, मेरे पास बुक खत्म हो गई है, बुक्स नहीं ना, तो सही जगह यूज करो। अरे ये देखो मेरे पास C1 है। हाँ ये वेपन भी अच्छा है इसके पास, ये वेपन क्लिक का है लेकिन इसके पे भी अच्छा है। मैं इसीलिए उसको दिया हूँ। C1 है मेरे पास। C1 अपना खास नहीं है, खास है तुम्हारा C1 देखो बेकार है लगभग देखा जाए। देखो 9 पर अटैक ज्यादा इसका सब करते नहीं है। पर मेरे को तो DBS सोच रहा हूँ, DBS ही बना के रखो इसको। बहुत अच्छा है भाई, 6 मिलता ना सेकंड DBS को डाल देता मैं 8-5 के लिए। मेरे को ये मिल रखी है ये इंजन। मुझे मिला क्या था पता है, कागज जब एक साथ मिल के वो किया था फुल पे, मेरे को C10 मिली थी, वो थी गोवा प्लास्टिक गोवा मुझे। निंगवांग तो उसका अटैक करने का तरीका अलग है, मेरे को पसंद नहीं है उसका करने का तरीका। वैसे स्टोरी में कितनी पावरफुल है, वैसे कहाँ पावरफुल नहीं दिखती है। मैं इसको बिल्ड किया हूँ, देखो जरा बिल्ड किया, इसका टैलेंट अप किया हूँ। ये यूंजिन को देखो, यूंजिन C4 की है मेरे पास ये C4, उसका टैलेंट में मैं ये अप किया हूँ इसका। बस मेन बात है मेरे पास इसका वेपन नहीं है। ये जो ये वेपन है ये तो इसका पूरा फुल मैक्स है, इसको समझ लो उधर से। रिफायरमेंट जो भी AR5 है मेरा, कह रहा हूँ जो तुम्हारा रेजिन फुल हो जाया करे, जब 160 पहले रेजिन का किया कर, यूज मत किया कर। जब रेजिन फुल हो जाए ना, मैं तुमको व्हाट्सएप पर नंबर दे रहा हूँ, मेरे को मैसेज कर देगा, मैं ऑनलाइन हूँ, सारा रेजिन यूज करा दूंगा तुम्हारा। तुम जरा इधर कर दोगे यूज ना, तो वही होता है। अरे नहीं तो इंस्टा चलाते हो गए, इंस्टा में मेरा कम चलाता हूँ मैं, कुछ कभी कभार वो तो मैं आज 2 स्टोरी खेल लिया, मतलब मेन एक तो
स्टोरी पहले किसका करना चाहिए इसका? अरे जिसका जितने आर्बन है ना तब तक दोनों स्टोरी करो। जब आर्बन का स्टोरी तुम कर दोगे दोनों तब तो वो वीकली बॉस अनलॉक होता है। स्टार्ट कर इसको ना। गानी का स्टोरी किया उसका क्या नाम है देखा मैंने उसका क्या नाम है? जो इसके पास घोस्ट है मतलब घोस्ट वाली वो थोड़ी एबिलिटी ही तो ऐसे कुछ नाम है इसका हूँ तो उसका पर एबिलिटी उतना अच्छा नहीं उसका हेल्थ ही जाता खुद नहीं अच्छा है वो उसकी हेल्थ जितनी कम होती है उसका डैमेज ना होता है। हाँ अरे तो उसके लिए तो वो चाहिए ना क्या बोलते हैं कोई कैरेक्टर ऐसा बैनिट है तो बैनिट का भी मैं लेके खेल रहा था मैं सोच रहा था मर जाएगी तो कल्याण अभी पता मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं प्री फार्म कर रहा हूँ जोंगली के लिए जोंगली जहाँ है तुरंत 90 लेवल पे उसको 60 लेवल पे कर दो। अरे मेरे को जोंगली मिल जाएगा फिर भी कोई मतलब नहीं है मेरे को जोंगली इम्पोर्टेंट है पता है यूमिया को जोंगली चाहिए दिक्कत नहीं। अरे वही बोल रहा हूँ गलती से मिल भी गया तो मेरे को कोई मतलब नहीं है वैसे ही पड़ा रहेगा मेरा काम तुम्हारे पास एक दो पीस आता है तुम जीतता हो कहते हो भाई फुल करने को सरकार को जब मन करा तो फुल कर देते मेरे पास अभी 23 विशेष पड़े हुए 23 एकदम वही पुराना वाला जिसमें इसको निकाला हूँ 24 पुल में जो भी 14 पुल वेस्ट किया था इसको निकल गई थी वैसे वो देखते हैं किस्मत में होगा तो जोंगली भी निकल जाएगा। मेरे को 1 महीना होने वाला है मैं भी तुक्का मार रहा हूँ कहीं कोई मर जाए। आज हमने चाइल्ड को मारा था और क्या बोलते हैं बहुत बॉस को मारा है बताया हम लोग मरे भी है कितनी बार कलेक्ट किया था किसको मारना नहीं जोंगली का भी एक ही हुआ है मेरे को की नहीं मिल रहा है ना अरे वो नहीं मिल रहा मेरे को भी क्या बोलते की मिलता है ना उसके बाद ही करते ना वो तो मैं भी स्टार्ट किया जिनसे हाँ मैं भी गया ना देखो अभी तो मेरे को 2 हफ्ते हो चुके हैं जोंगली का एक ही हुआ है की मिला नहीं है मेरे को गानी का आज मेरे को मिला था तो मैं कर दिया दोनों करो तो बॉस अनलॉक हो भाई अच्छा वो तुमको योमिया का मटेरियल देगा तब तुमको डेवलप कर पाओगे टैलेंट का 6 के बाद हाँ तो अगर अगला की मिलेगा तो जोंगली का कर लूँगा तो तुम 5-6 तक की एक मिशन में यही स्टार्ट करने तक क्यों कर रहे हैं जोंगली वहाँ से स्टार्ट ही नहीं किया मैं वापस से बाहर आ गया मैं भूल जाता हूँ एग्जिट कर दिया मैं कमेंट देखते देखते एग्जिट मार दिया कहाँ चला गया ये बेनिट किधर गायब हो जाता है मेरे डिस्प्ले से कैरेक्टर को बिल्ड करना है ना उसका यही है एक कैरेक्टर पे ही फोकस करना है अगर तुम सोचो कि ये भी कर दो वो भी कर दो एक भी नहीं होगा क्या जो तुम्हारे पास पूरी है वो है तब जो होती है पता तुमको केस होती नहीं लोग छोड़ छाड़ के मेरा दिमाग में हेजू आ रखा है इसको बिल्ड करना है हेजू का पता तुमको दिख रहा है कि डैमेज ज्यादा दे रहा है सबको अरे नहीं हेजू का मतलब स्टाइल मेरे को पसंद है मैं देखो एक टाइम पे कितना डैमेज देती है छोटा डैमेज देती है लेकिन वो एक बार डैमेज छोड़ देती है कई डैमेज देती है हाँ तो मैं हेजू के साथ रखूंगा ना उसको क्योंकि उसका वो और हेजू तब रखो जब किसी हो जाए तो ये बोलूंगा
अरे सब डीबीएस बना के रखेंगे इसको, नहीं तो क्योंकि उसके मतलब ये भी तो मतलब ट्रैवलर वाला काम करता है जब इसका वो होता है। जब ये वाला अटैक करता है देखो, पर ये अटैक लगा ही नहीं मेरा। मैं गानियों के साथ नहीं खेल पाऊंगा, वो निकल जाएगी तो मेरे को मतलब नहीं पड़ेगी। इनके सीले पे असर ही नहीं होता है, बल्कि तो मैं ही पिट रहा हूँ। मैं बैंडेड का यूज कर रहा हूँ और ये फंस जा रहा हूँ इसमें। मर ना जाऊँ बैंडेड, मरियो मत। बारबरा सही मारती है, इतना बड़ा बॉस था उसका शील्ड तोड़ देती है। आओ क्लेम करो, इधर है पीछे नहीं भाई, इसमें बड़ा मैं करते होता हूँ, कई बार पीछे चला गया हूँ। मैं गिर जाता हूँ तो सही। नहीं स्टार्ट कर दो फिर से, ये नहीं स्टार्ट कर। तो मेरे 12 ही बजे से क्राफ्ट कर लूंगा ना, अभी तो भी मिले छोटे छोटे जो भी हैं। अरे वो तुम वो क्राफ्ट करने के लिए ही है, छोटे मिलते हैं। पता क्या करना, क्राफ्ट में जाते तो वहीं पे एक कंटेंट दे सकता है, 40 रेजिंग यूज करके यूज कर सकते हो, वो यूज करो ज़्यादा बेटर लगेगा। ये तो जल्दी हो, अगर कभी कभी एक आध बार गोल्ड मिल जाता ना तो वो भी डबल कर देता। हाँ मेरे पास बहुत बार करना पड़ जाता, टाइम बचा देता है वो, देखा जाए तो। अच्छा ये क्या है, देखो देखो क्राफ्ट वाले पे चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ, स्ट्रीम पे देखना। मेरे को पता ही नहीं है वो क्या सीन है उधर, क्या मतलब क्या बनाते, क्या क्राफ्ट करते हैं। अब करो, दिखाता हूँ। मेरे को मिल रखा है मॉन्स्टर को मारने के बाद। ये देखो ये चीज़, ये इनका क्या काम है? बता रहा हूँ सुनो, ये जब टैलेंट डेवलप करते हो 6 के बाद तो ये मटेरियल भी लगता है टैलेंट के लिए, कैरेक्टर के। अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं ना मेरे लिए। ये हाई इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसको कारण पता है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्या नाम है, हफ्ते में इनको एक ही बार मार के रिवॉर्ड दे सकते हो। और पता लगा तुम्हें कैरेक्टर डेवलप करना, तुमने मार नहीं रखा, कैरेक्टिंग कर रहा, बाद में क्या ना एक हफ्ता रुकना पड़ेगा हर हफ्ते, इसको कलेक्ट करेंगे। पता है इसलिए मैं अपना अभी पूरा वो नहीं कर पाया हूँ। मेन डीपीएस का टैलेंट नहीं डेवलप कर पाया, उसी कारण मटेरियल नहीं है, हफ्ते में एक ही बार मार सकते हो। अब पता है अभी तुम्हें तो जो टैलेंट उसको चाहिए, क्या नाम, जो मटेरियल उसको चाहिए, क्या नाम है, ये देखो ये वाला ड्रैगन करके जो है ना, ड्रैगन, ये देखो क्लिक करो। ये हाँ ये जो है ना, ये योमिया को चाहिए। अभी तुमने ये बॉस ओपन ही नहीं किया है, अब योमिया को जब उसका टैलेंट अप करोगे कैसे करोगे? कर लेंगे तो ओपन कैसे होगा ये? स्टोरी क्वेस्ट वाले पाऊँ दिखता है, स्टोरी क्वेस्ट ओपन करो अपना। ये देखो कहाँ गया, ये मत यूज कर मुझे, ये स्टोरी देखो क्वेस्ट पे आओ, कुछ नहीं है इधर। बॉटम में कोई स्टोरी क्या दिखा, बॉटम में देखो लिखा है, ये देखो जोंगली बचा हुआ है, जोंगली एक है। हाँ इसमें जोंगली दिख रहे हो? हाँ पहले जोंगली करो, इसके बाद भी एक और बार जोंगली होगा। नहीं एक ही बार है, मैं एक बार कर चुका जोंगली को। अच्छा एक्ट 2 है, हाँ जोंगली करो। सुनो अब की बार जब मिलेगा ना, कल वाला कमिशन कर लोगे ना, तब जोंगली को पहले करना, तब तुम्हारा वो बहुत सारा और लॉक होगा तुम्हारा। ठीक। और ये दोनों का क्या सीन है, ये तो ओपन ही नहीं होंगे। तो पहले और कौन का हमेशा स्टोरी क्वेस्ट करो, इसके
इसके बाद उसको करना है, तो स्लोगन करना मेरे पहले को आसन करो, उसके बाद ही सौगन कोई करना। ठीक है। बाकी सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको तुम बाद में भी कर सकते हो। सौगन का मैं अगर एक कर कर लोगे चुका तुम्हारे हूँ, बहुत दूसरा सारे बचा हुआ जाएंगे। है। मैं इसका भी एक किया हूँ, दूसरा हाँ, बचा दोनों है। का एक कर लो, पहले जोंगी करना कल, तो फिर परसों वो कर लेना। हाँ मैं पर ये हाँ कल जोंगी की कर कैसे लेना, मिलता परसों वो कर है? लेना, स्लोगन कर लेना। और ये इनका क्या सीन है? देखो इधर मेरा एज ऊपर बाकी ये सब रखा बाद है। में एक कर लेना, ये सब बाद में किया करो, ये सब बाद में करना, ये सब तब करना जब सारी करना पड़ेगा। ये तो क्योंकि हुआ ही देखो नहीं मेरा एक भी। इसको 2 की चाहिए होती है और नीचे में एक चीज नहीं होता है, जैसे मैं तुम्हारा 6-7 बार तुम करोगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा, ये तुम्हारा 1-8 साल में कंप्लीट कर पाओगे। चलो जो है तो इनको करेंगे फिर तो। चलो तुम 1 साल तक करते रहोगे तभी तुम्हारा कुछ कोई बचा रह जाएगा, ऐसा है। पहले जॉब करो, कल जॉब नहीं कर लेना, परसों कर लेना। ये सब बाद में करूँगा फिर। जॉमली और राइडेंस होगन। पर ये की कैसे मिलती है मेरे को? ये की तो बहुत दिनों बाद मिली है, 2 बार। मिशन करते हो डेली ना, जब डेली 2 दिन का मिशन करो तो अभी तक मैं डेली मिशन ही नहीं किया, पता है? इससे भी वो मिलता है, याद है जब 8 कमीशन करोगे तो 1 की मिलती है। यार डेली मिशन करो ना, अभी कितने के हो? अरे डेली मिशन में बताने क्या सीन है, मैं तीनों बचे हुए मेरे। कमीशन पहले किया करो, सबसे पहले 30 का सबसे पहले। देखो इसका सीन है पता है यार, कमीशन किया ही नहीं। ये देखो इसके अंदर क्या सीन है, मैं दिखाता हूँ। मैं करता हूँ पर इसमें सीन अलग है। इसको कुछ देना है, इसने पहले बताया ही नहीं है क्या चीज़ देना है इसको। कुछ खाने के लिए देना है और उसमें मेरे को पता ही नहीं क्या चीज़ है। उसको एक चीज बना के बता रहा हूँ ना, जाओ उसके बाद बात करो, बात करो तो बताइए, तो बताइए। ये कॉप मोड से एग्जिट करने के लिए बोलते पहले तो। क्या ये देखो अभी जब डेली तुम्हारा वो कलेक्ट हो जाएगा, डेली स्टार्ट हो जाएगा, तब डेली को मत बता दो। तो एक बार मेरे से पूछ लिया करो, बता दो। अब इसमें देना क्या है? कुछ तो सब कुछ तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तुमने स्टार्टिंग में बात की होगी ना, तो उसने अरे बात की थी मैंने, पर पता नहीं स्टार्टिंग चला। में तुमने बात की होगी, वो देना है इसको। कौन सा फूड का बात किया है, क्वेश्चन तो ये आ रहा है मालूम। वही मैं क्या चीज क्या रहा है, ब्रिंग द कंप्लीटेड डिश बैक। कौन सा डिश आप ये बता, ये नीचे आगे चलना पड़ेगा, नीचे लेट्स चला। अरे पहले नहीं सेकंड दबाओ ना, लेट्स सी क्या क्या है, वो चला दो। कौन सी डिश पहले इसको देना है ये तो चेक करो, फिर ये देखो सेकंड नंबर पर क्लिक करना है। इस बार किया हूँ सेकंड नंबर पे। अब देखते हैं कौन सा इसको डिश देना। राइस बंस, फ्लावर, ट्राई कलर टैंगो देना है इसको। जाके वो करो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे का बताता हूँ। जब हटो यहाँ से डिश क्राफ्ट करते हैं। देखो राइस बंस, लोटस फ्लावर का था, और इसका वो ट्राई कलर टैंगो। यहाँ आए बात नहीं, इसे चल रहा है। ये फूल रखो ऊपर, इसको तुम्हारे पास है कि नहीं? रुको नीचे ऊपर ऊपर जाओ, तो तुम्हारे पास है? नहीं, ऊपर वाले में तो मेरे को तो नहीं नजर आ रहा है। देखने दो, देखिए तुम्हारे पास है कि नहीं। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे नीचे दिखता तुम्हारे पे वही नहीं। तो इसीलिए तो मैं अटका हुआ, मेरे को मिल ही नहीं रहा कुछ भी। बैक करो, तुम्हारे पास किसी नहीं है, वो बाई करना पड़ेगा। डिस्क किधर से बाई करते नीचे बताता हूँ कैसे। हटाओ यहाँ से। अच्छा, एक कुक वाली की जगह पे नीचे जाओ तो मुझे डिस्क पहले बाई करनी होगी। इस पे डिस्क जहाँ पे वो नहीं है, फोर्जरी नहीं है, वहाँ पे जहाँ पे आइटम फोर्ज करते हो, वहाँ पे जाओ नीचे। इधर क्या यहाँ नहीं देगी, इधर नीचे है। जा रहा हूँ उधर, कुछ देखने लग गया। तो इससे कहाँ बची आ रहा है? मत दिया खुद देगी नहीं, ये खुद नहीं देगी, निकलो इससे। क्राफ्ट करने का इधर से फूड बाई कर लो, बताता हूँ। फूड भी तुम्हें मिल जाएगा।
किधर से फूड मिलेगा? मिलेगा इधर, यहाँ थोड़ा आगे जाओ, ये सारे फूड देगा। देखो ये बात करो इससे, ये क्या बोलते सर? हाँ इससे बात करो, रेस्टोरेंट में वही रेस्टोरेंट, पीछे बात पीछे कर पीछे। रहा हूँ, बात कर देखिए रहा ये हूँ। शायद फूड दे दे, शायद तुमको फूड दे दे। बात करो इससे। आई लाइक टू बाय। फूड तो नहीं लेकिन है। इसमें नीचे और एकदम नीचे और नहीं, इस पे है नहीं, इसके इसके पे वो होगा, ब्लूप्रिंट होगा ऊपर, और ऊपर और ब्लूप्रिंट होगा। देखो ब्लूप्रिंट है कि नहीं इस पे? ये क्या एग रोल है ये तो? नहीं, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। नहीं है इस पे, एग्जिट करो इस पे, इसके बाद ब्लूप्रिंट नहीं है। नहीं इस पे नहीं है, बैक करो, दूसरा ले जाओ। नीचे नहीं देंगे तुमको, एक नीचे भी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मिलेगा तुमको। नीचे का तो पता है। नीचे 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 कूद जाओ, यहीं से आगे से कूद जाओ। हाँ ये नहीं देगी, यहाँ से कूद जाओ, 24 पॉइंट से कूद जाओ ना सीधा। इधर तो आ गया जाओ इस कूद जाओ, सीधा प्राइस के पे जाओ ना। रुको, किधर जाना है मतलब इसमें मैप पे? बस बस वो नीचे बगल वाला, वो छोटी छोटी शॉप है, जहाँ पे आई जो आई बटन बताया शायद। सर नहीं उधर वाला, नीचे इसके नीचे साइड में। चलो नीचे जाता हूँ। ना ऐसे नहीं, से बात नहीं करना, उधर जाओ, नीचे जाओ बात ना। नहीं कर रहा हूँ। लेफ्ट 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 ये लेफ्ट, आप सीधा जाओ, ये जाओ उधर पीछे 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 पीछे। नहीं रेस्टोरेंट पे जाना, इधर नहीं, एक रेस्टोरेंट है पीछे तुम्हारे। ये भी रेस्टोरेंट तो नहीं? अरे जो मैप में देखो, हाँ हाँ ये रही जिसके ऊपर आई बटन बना है, ये देखिए तुमको, वही 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 बात करो, ऐसे ही बात करो। ये दे देगी फूड? यहाँ जो तुमको क्वेस्ट भी देगी, शायद वो भी देगी। पिछला कुछ और ही दे दे। शायद फूड भी देते हैं इसके पास, शायद वो भी हो। अरे न्यू वो दे दिया इसने। पहले क्वेस्ट देगी तुमको। नहीं तो मेरे को कुछ दे अभी इसको बात करो। नहीं दे ही नहीं रही है वो, कुछ भी नहीं दे रही है। पहले इसको क्वेस्ट करो, उसके बाद तुमको ये देगी। गलत चीज वो है। देगी नहीं, अभी क्वेस्ट है ना, बात ये है ना। मेरे को कितनी मतलब कहाँ जाना है? इसका पहले क्वेस्ट करोगे तब तुमको खुद दे पाएगी। देखो तुमको नया क्वेस्ट भी है, पहले क्वेस्ट कंप्लीट करो, उसके बाद होगा। क्वेस्ट करोगे, इसके पास आओगे तो जो ट्राई कलर टैंगो वाला है, तो शायद फूड, अगर फूड ना मिले तुमको ना, तो क्या नाम है, उससे रेसिपी फाइंड कर लेते, रेसिपी फिर फूड कर लेते। हाँ फिर मटेरियल में लगी देगी होगी। वो करना चाहिए तो फाइंड करो। मैं किया नहीं हूँ बहुत सारे चीज में, पजल वजल के चक्कर में। ठीक है, इससे बात करके आनी थी वैसे से हो गया। अरे वो लंबा क्वेश्चन है, उसको वो रेसिपी देना है तुमको, पिज्जा बनाने की। पिज्जा? अरे है वो मेरे पास, पिज्जा तो मैं बना भी चुका हूँ। पिज्जा उसकी मॉम के लिए बनाया था। क्या नाम? सुबह के जितने भी क्वेश्चन और पजल है सारे बहुत लंबे लंबे हैं, दिमाग खराब हो जाता है। अरे मैं गोल्डन एप्पल का इसलिए नहीं कर रहा था। तो लंबा रहता ना। मॉन्स्टर और लीवर का क्वेस्ट कब खत्म हुआ मुझे पता भी नहीं लगा। मॉन्स्टर और लीवर का क्वेस्ट कब मैंने खत्म भी कर लिया मुझे पता भी नहीं लगा, और सुबह का भी आधा ही हुआ है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं कुछ छोड़ा हूँ पीछे जाके। ये देखो इसने मेरे से ये मांगा, पहले से रख रखा हूँ ये सब चीजें। को पिज्जा दो भाई, डोमिनोज से मंगा दो, मटेरियल दे दो। है मेरे पास, है बना लो। बनाएगी खुद पिज्जा। मैं सब कुछ एक्स्ट्रा खरीद के रखा था, पता है जब पिज्जा बनाने वाला वो आया था। हो गया ये कंप्लीट, बुक भी मिल गया मेरे को। अब खरीद सकते हैं। ऊपर वाला। हाँ क्या, कौन सा डिश खरीदना था इससे? फूड पैकेट तो ये रहा। इसमें फूड है कि नहीं? नीचे आओ, राइस करके था ना, ये रहा। नीचे आओ, नीचे फूड हो। हाँ ये रहा राइस वाला। आओ राइस टिप्स, और नीचे आओ। हाँ बाई करो राइस का, ये नहीं था बाई कर दो, लेकिन शायद यही हो।
एक ही बाय करता हूँ मैं, ताकि बाय करो और एक और बाय करना, ट्राई कलर टैंगो करके एक एक जगह एसपी होगा, ट्राई कलर टैंगो, उसको भी बाय कर। किधर किधर? हाँ वही 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 कर, ट्राई कलर टैंगो। हाँ ये किधर किधर? आवाज अरे वो नहीं क्या है ना ब्लू में सबसे पहला वाला, ट्राई कलर टैंगो। हाँ यही है, वही कर, यही ना, मोर एंड मोर करके जो है। ट्राई कलर टैंगो लिखा नहीं है एसपी? एक मिनट, ये कहाँ है? इसका नाम मोरा मोरा है। हाँ हाँ, वो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, एक बार दोबारा बोलो जरा। ट्राई कलर टैंगो देखो। टेंगो, अरे कहाँ है इसकी ऊपर वाला है ये क्या है? ये टैंगो टैंगो करके जो है यार। हाँ हाँ, तो ये लास्ट रहा में ये रहा टैंगो ये दिखा रहा है। ये रहा। वो नीचे आवाज सुनाई दे रही है अपनी। हाँ पहला वाला है। मैं जल्दी वो नहीं करता। ओके कर लो, हो गया ना? पहले अब जाएं इसको अब देख जाओ के उसके आए। पास। देखो अगर वो तुम्हारा राइस केक और ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुमको बनाना पड़ेगा। भाव बड़े इन लोग के हैं, साला बावर्ची समझ रखा है पूरा का पूरा। चलो एक काम करो, अ, पहले नीचे जाओ, नीचे जाओ बता रहा हूँ, नीचे जाओ, उसका मटेरियल ले लो। इसका पहले इसको देख के ही आते हैं, छोड़ो क्या पता हो जाए। 10 तो प्रीमो जेम्स मिलेगा ही, 10 प्रीमो जेम्स के लिए इतना मेहनत करा रही है, उतना मतलब 30 प्रीमो जेम्स छूट जाएंगे अगर ये नहीं करूँगा तो। स्टीम कैसे होता है? स्टीम का आवाज रिपीट हो रहा है। अरे नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है तो अब सुनो, जाके भाई वो फूड को बनाओ, फूड को बनाओ पहले, नहीं बगल में। ये रेसिपी बना लेते हैं। स्टीम तुम्हारी अटक गई, क्या हुआ? नहीं अटके नहीं है, देखो आ गया होगा। अब वो गायब हो गया, कहाँ गया वो? तो बॉल करके है ना नीचे से, ये तो पहले से ही था। नीचे से सेकंड लाइन, नीचे से सेकंड लाइन में सेकंड नंबर, नीचे से सेकंड लाइन में सेकंड नंबर चाहिए मेरे को, ये चाहिए इसके लिए मिल्क मिल्क सिर्फ। हाँ यही, इसके लिए तुम्हारे पास मटेरियल क्या क्या है? मिल्क तुम्हें चाहिए, मिल्क चाहिए, मिल्क जाके बाई कर लो, बगल में मिल जाएगा। मिल्क पकड़ वो बुड्ढे ट्राई कर लो, वो पीछे है, पीछे है, बुड्ढे नहीं, बुड्ढे के बगल में एक और नीचे, नीचे सीढ़ियों से उतरो, सीढ़ियों को बगल में क्या ये नहीं देखा? सीढ़ियों से उतरो, सीढ़ियों से सीढ़ी की तरफ जाना, यहाँ ये रहा, यहाँ पे मिल्क बाई करो। कितना कर लूँ? 1 2 वो तो करना है यार, 4 कर लेता हूँ, कुछ और बनाने को मिल जाएगा अभी वापस घूमते घूमते। पता है ये क्वेश्चन तुमको बार बार मिलेगा और हमेशा तुमको ये फूड बनाना पड़ेगा। वही खाना बनाने के लिए ऐसी तैसी करती है। ये रहा, पता चला मिस कर दिया तो गलत सीन हो जाएगा मेरे पास, ज़्यादा वो भी नहीं है, मिस नहीं करूँ बस हो गया। इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं इसके लिए। अरे यार मुझे खराब लगता है भाई, पहले पता है स्टार्टिंग में भी ऐसे जेल हो गया था, तो यूट्यूब पे चेक किया था क्या अपना जानो क्या दिक्कत हुई थी। सेम दिक्कत तो यही हुई थी कि उसको फूड देना कौन सा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग, बहुत दौड़ना पड़ा मेरे को। मेरे को ऐसी चीजें पसंद नहीं है, सीधी दे रहे तो गेम में अच्छी थी, क्या दे रहे हैं अभी इनको किल करने और ये सब ऐसे। रुको कौन सा बचा हुआ है? 2 है ना, दोनों कर लो। जाए ना अभी तब तक तुमको मिला है। फाइट करने का तो होगा तो मैं पिटूंगा ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पिटता हूँ इन सब चीज़ों में। ये क्या चीज़ है? ये वो वाला है, वो देख रहे हो उसको एयर से मार दो, ये नहीं है
बॉम्ब जैसा बना है, इसको एयर मारो। अरे मैं उतरते ही था तो इसको यूज कर मैं दो, चला गया। बस हो गया। ये तो एक बगल में है, इसको ले। हो रहा चमक रहा है, पीछे 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 उल्टा जा रहा है। ये तो इसी क्या कहते हैं, क्या यूज कर दिया इसके ऊपर। कुछ आ गया मेरे को मारने के लिए, मैं मरेगा नहीं तुम लोग सेट। हाँ एक बार इतने भी आते हैं मारने रख। हो गया, उधर जाओ। अब इसको मारना है। अभी नहीं आया, अभी इसको AR50 के बाद जब हो जाएगा तब बड़े बड़े नहीं आएंगे। हाँ तब तो हम भी पावरफुल हो जाएगा तो अच्छी बात है। कहता कि सीजन करके यही सही है, तो कहीं तो तुमको उसका लिमिट यूज करना है, नॉर्मल अटैक यूज कर दो, उसमें भी लिमिट मारता है, ये सही लगता है। ये तो वाला होगा तुम्हारा वो टेच चार्ज, ये अंदर का क्या है वो जो इलेक्ट्रोग्राम में कितना रिमोट में तक उड़ते उड़ते नहीं है वाला। हाँ ये शायद इसे मैं देखा था। वही है इलेक्ट्रोग्राम से मैं कर लिया। पता है अभी यहाँ पे जाओ बताता हूँ, जहाँ पे वो दिया हुआ है ना वो लोड, उसी के नीचे इसी के अंदर इसके मुंह के अंदर ये आप जैसा बोल नहीं, इसके मुंह के अंदर एक लड़का रहता है। अरे वो लड़के वाला मेरे को परेशान करता है। गेम खेलना पड़ेगा, गेम उसका बार-बार खेलोगे तुमको बार-बार चेस्ट देगा। वो मेरे को लड़के वाला एकदम घटिया लगता है। इससे पहले बादल ये करो ये करो नहीं ये करो। चलो उड़ के जाओ, इरिटेट कर देते हैं। अच्छा देता क्या करोगे। और ये तो ठीक है, एक अंदर में ले चुका है भाई, वो तो बड़ा खतरनाक है, वहाँ जा भी नहीं पाएंगे इसको। अभी किधर जाना है? बस सीधी लाइन पे पीछे पीछे जाना और जाना। और ये चाहिए ये चीज़ है, इसके लिए मेरे को बच्चा दौड़ाया था वो साला 2 बार लेने के बाद भी मना कर दिया था। वो तीसरी बार लेके आया था मैं, तीसरी या दूसरी बार। डाउन हो जाओ ना, तेज जंप हो गई, टाइम हो जाएगा और डाउन और डाउन। इसे चाहे से पैदल ही भाग जाऊँ मन कर रहा है। पता मैं हुआ क्या था ना, जब पहले जहाँ जाना था ना मैं वहाँ पे नीचे गिर गया था, तो मैंने क्या किया आया खाते में पूरा नीचे दौड़ गया हूँ। ये देखो 78 लेवल की है सामने वाली। आया मिल गई इसलिए पूरा इनिजुमा को करने वाला ये बड़ा नहीं इरिटेट हो गया इन लोग से। इसके पास बहुत सब एनिमियों में सबसे ज्यादा इसके पास एचपी होती है जो सामने। अरे सबसे ज्यादा वो नल्ला जो होता है ना, क्या नाम है वो, इसके पास सबसे ज्यादा एचपी होती है। नहीं ये तो मर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या नाम है जो सीड लगाता नहीं है क्या, जिसके हाथ में गन रहती है। और एपी से बड़ा दिक्कत देती है इसके बाद, वो जो मारते वाले टाइम लग जाता है और बस अभी देखो जल्दी मारना रहता सब कुछ, जल्दी करना रहता है, टाइम खराब। तो मैं जमा के मारता हूं। अभी मैं कैसे मारूं? कहाँ भाग गई? टेलीपोर्ट कर गई नहीं योगी मारो अपने आप दोनों लोग। अरे मेरा हेल्थ का इशू है, मैं भी मर जाऊंगा, मेरे को पता है। मारो ना उसको, योगी बहुत सही मारेगी इसको, खा जाएगी इसको। अरे बिल्ड तो होनी चाहिए खा तो जाएगी। ये देखो 4000 डैमेज ये देता है। तुम्हारा बाकी प्लेयर ही कौन से बिल्ड है? कोई भी बिल्ड नहीं है, कोई भी बिल्ड नहीं है। ये तो खत्म हो गई होती। ये देखो नीचे जरा डैमेज छोड़ो है, किली बहुत गंदा मारती है वो, मेरे को पता है। वही तुमको यूज करना चाहिए, कोई छोटा डैमेज दे दे ये सारा डैमेज दे दीजिए। ये तुम देखो, ये चीज कोई देखता नहीं है, सब देखते हैं हाँ 4500 डैमेज, 4000 डैमेज, 1 लाख डैमेज किया, बस यही सबको मजा आता है। पर वो देखो कितना टाइम लगा रहा है उतना डैमेज देने। अरे मेरे को 2-3 वो चाहिए। योमिया वाला बहुत तेज मरेगी वो, क्योंकि वो वाटर टाइप है और योमिया फायर में भी ये प्राइस आएगा हर बार। ये उसका इसके इसका और मल्टी के लिए है, वो जमीन पे मार दिया। सपोर्ट बना के रखा है वो भी बहुत सपोर्ट। ऑलमोस्ट मर गया हूँ मैं, हट जा, मरने से पहले बच जाएगा नहीं। पता है तुम योमिया के साथ वो यूज करो, फिसल मालूम? योमिया के साथ फिसल को यूज करो। हाँ तो वही तो मैं फिसल को टीम में डालो बता रहा हूँ, चैनलिंग को हटाओ, फिसल को डालो बता दो।
हाँ ये फायर पिछल टाइप को रश दोनों दे है दो, ना। पिछल को रश दो और योमिया को स्टीम में डालो। वो पिछल को स्टीम में डालो, पिछल को रश दो। पिछल भी ये दोनों वो यूज कर सकती है जो तुम्हारी योमिया को है, पता है पिछल और योमिया लगभग सेम ही है। पर मेरे पास वो है कहाँ? अरे अब मुझे ये नीचे जो 26 लेवल पड़ी है अच्छा नीचे ये देखो, नीचे सेकंड हाँ दिख गई। मैं भूल गया कि मेरे टीम में है भी ये। हाँ इसको लो, इसको रश दो, इसका वो चेंज करो। वो देखो कौन सा है, वो रश दो, इसको वो दो रश दो, इसको कहा दिए हो रश दो इसको। इसके बारे में तो मैं भूल ही गया, मेरे इसका पास जो है भी। देखो इसका जो दूसरा वो तुम्हारे पास सिग्नेचर वो भी है, वो भी अच्छा पता है, लेकिन वो कब अच्छा है जब पिछल को मेन डैमेज यूज करो तब वो अच्छा है। अब सुनो क्या करो, पिछल लगाओ बता रहा हूँ तो कैसे यूज करना है। पिछल लगाओ, एक बार खड़े हो जाओ, सिंपली खड़े हो जाओ, पिछल का ये क्रो यूज करो, बस क्रो यूज करो, पिछल का स्किल यूज करो, उसके बाद योमिया लगाओ। अब योमिया लगाओ, लगाया। जो तुमको बस पिछल का ये लगाना, उसके बाद योमिया का स्किल यूज करके बस फायर करना और कुछ मत करना। एनिमी पता है, एनिमी जब मारोगे ना तो एनिमी को ओवरलोड हो जाएगा रिएक्शन, और ओवरलोड में ना सारे एनिमी को झटका लगता है और पीछे जाते हैं। बस ये ट्राई करो क्या? ट्राई करते हैं, टेलीपोर्ट हो बस जाऊंगा। उसको वो लगाना है, उसके बाद वो करना और वो डालो पिछल के साथ। ये इसके साथ हेल्थ नहीं था, हेल्थ कर देते। इसकी टीम में अभी फिलहाल तुम्हारे पास यूजिन है, बेनेट है, यूजिन बेनेट और क्या नाम है फिशल, योमिया की टीम में यही चार डालो चलो तो ये रहा। अब ऐसे फिलहाल तो अभी तो फिशल डिफिकल्ट नहीं, लेकिन ओवरलोड का डब भी जाएगा। ओवरलोड ना जो ओवरलोड रिएक्शन जाता है इलेक्ट्रो और फायर होगा तो ओवरलोड जाता है और ओवरलोड में एक्सप्लोड होता है, बम जैसे फटता है। वो देखो अकेले पड़ा जो हुआ है ना ऑटो अटैक में सपोर्ट के लिए बहुत सही है। मेन डैमेज इधर भी अच्छी है, मालूम है इस कलर तो तुम्हारा वो है। हाँ तो मेरे को पता ही नहीं ना, मेरे को बिल्डिंग है सब कुछ तो अच्छा है, पता नहीं क्या चल रहा है। को फार्म करने का है वाला अल्टीमेट फार्म करो, वही बिल्ड हो जाएगी, तुम्हारी फिशल भी बिल्ड हो जाएगी, तुम्हारी योमिया भी बिल्ड हो जाएगी, फिशल भी बिल्ड हो जाएगी और तुम्हारी जो डिफेंस मिलता है। ये तो पीछे गया कि नहीं ओवरलोड कर जाएगी, ठीक है ओवरलोड डैमेज जा रहा है। लाइट देख रहे हो, ये बहुत खतरनाक है, इसकी लाइट तो ये आ गई के बाद में हो जाती है। अब उसका क्रो लगाओ, उसका बस इसका तो नहीं, बस इसका तुम्हें बस क्रो लगाना है। करो लगाऊंगा खत्म ऐसा। कूल डाउन पे यहाँ पे कूल डाउन पे इसको जब वो दे दोगे स्टार्टिंग में कर दे दोगे ना पिछल का तो बहुत सही डैमेज आता है और इसके कूल डाउन भी कम हो जाता है। दोनों एक साथ आ गए, ये तो ब्लॉक हो रहा तुम्हारा अटैक। हाँ वो दोनों एक साथ आ गए इधर। थक जाओ। आप एक हटो वो तेज काटे क्योंकि या तो चार्ज कर रहा हो ना, अब पिछल लगाओ इसको मार ही दोगे, तो बकती हो तो मेरे तो मारेगा ही। और इसका डेवलप पता तुम दोनों वेपन को डेवलप करो, क्योंकि तुम एक ऑफिशियल अगर तुम एक ऑफिशियल पे यूज कर लोगे दूसरे पे जो दूसरे को जो वो देखो तुम्हारा वो कहीं और वो दूसरे को यूज कर रहा है, बहुत सही। पता एक चीज और एनिमी से तुम बच सकते हो। डॉज कर ले रहा हूं। अपना ये अल्टी बस्ट यूज करती है ना तो ये अपना स्किल दोबारा यूज करती है, ये चीज और है। इसको ये ऊपर कूद रहा है नीचे क्या डैमेज जा रहा है, 2000 से कम जा रहा है। अरे चार्ज कर रहा है। ये तो हमेशा तुम्हें दोनों लेवल करना, मतलब दोनों पे वो लेवल करना, मतलब क्या करना है दुनिया को पहले पूरा फुल दो लेवल करना, उसके बाद ये देखो क्या पंप से पट रहे हैं तो धक्का खा रहे हैं, हटता ही नहीं जल्दी। ये असल में इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये देखो ये पीछे पूरा घूमेगा, पता है मेरे को। रुको अभी इसको इससे मारेगा अभी कूल डाउन में है। मारने की तरह मारता है ये, इसका डैमेज अभी भी
पता है इस अपडेट में इसका डैमेज कम किया गया है, ये समुराई जो है इसका डैमेज कम किया गया है। बहुत हरामी लौंडे हैं लोग। तो लोग यहाँ पे बस वो लगा दो, अब किसी जगह इसके लिए करो ना तो पूरी जगह लगेगा ये। अरे वो ब्लॉक करके खड़ा हुआ है, पीछे जाके मारेगा। इसलिए योमिया को चाहिए ट्राई, जब ये ऑटो अटैक करती है तो उसको डिस्टर्ब करना कोई योमिया को फिर चाहिए, और योमिया के लिए इसलिए यूनिक सही प्रोवाइड कर देती है और प्लस अटैक भी बढ़ा देती है थोड़ा और अटैक की स्पीड बढ़ाती है। यूनिक अच्छी है लेकिन चीज चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास ही फोर्थ नॉवल होती है, शील्ड है ना मेरे पास, उसका क्या नाम है वो मेड नोवेल। जंगली नहीं है मेरे पास पर वो है। अरे मेरे को ये इरिटेट करता है। एक सेकंड में, एक सेकंड कोई आया। तुम्हारे पास तुम्हें चेस्ट चाहिए, एक चेस्ट है तुम्हारे पास, जो तुम्हारी चेस्ट है वहाँ वहीं जहाँ मारे थे यहाँ। उसके बाद ये जो तलवार चमक रही है ना, इलेक्ट्रोग्रानम पिक करो, उसके बाद ये तलवार को टच करो, तब यहाँ पे एक समुराई निकलेगा, उस समुराई को मारोगे तो तुमको चेस्ट। अरे वहीं पे था जहाँ पे समुराई मरा था लास्ट बार, जहाँ समुराई मरा था वहीं पे था। अरे मैं नीचे पहुँच गया था। अब बताओ क्या बोल रहे हो? नीचे चला गया था मैं अभी। स्ट्रीम 5 सेकंड की डिले होता है, 5-6 सेकंड। मार को हमारी चीज भी कर दे। बैनेट का भी मैं वो ये रखा हूँ, अपग्रेड नहीं किया अभी तक वेपन। मैं अभी तक हटाना पड़ेगा, अभी तो यूज कर सकते हो, क्या नाम है हटाना पड़ेगा। वेपन तो चेंज ही करना है। फीचर भी करनी है यार, पता है अगले वाले अपडेट में फीचर भी आ गई है, फीचर आ ही गया ना, तुम डायना को भी यूज कर सकते हो। ये भी मर गए दोनों। अब मारो ना उसके योमिया से तो डैमेज देगी, बैनर के बस्ट के अंदर देखो डैमेज देगी। खत्म कर दिया मैं, पीछे है वो भी। इतने जल्दी मर गए ये भाई यार। योमिया मुझे नहीं के दिमाग खराब हो, योमिया चाहिए। मेरे 50 हार गया, मैं जीत गया, मेरे को वो चाहिए था। मैं खाली एक ही 50 जीता हूँ अभी, क्या नाम है आयाका पे, वो भी 81 पे मिली थी लास्ट। मैं 2 पे जीता हूँ बता, मैं 2 पे जीता हूँ और 2 पे हारा हूँ। मैं वेपन पे हारा हूँ, जो मेरे को 2 वेपन मिले हैं, पर मेरे को हारना क्या जीतना है। 50-50 हारे नहीं, पता है तुमको? अभी तक तुम 50-50 हारे ही कहाँ हो, अभी तक जीते ही हो सारे अच्छे तुमको मिले हैं। मेरे को वेपन किया है, मिला वो है। मेरे को देखो 3 जिसमें वो मिल की कैली, जो कि उसके बैनर में से निकाला था मैं जब मैं आया था तब। तो तुमको 3 विश मिली थी भाई, 3 विश। उसके बाद ये मिली है मेरे को, जब विश किया वो 3 मिल गई है। उसका मेरे को फिर वो वेपन मिला था। ये नहीं देखो, वो कैरेक्टर से ये सब नहीं खोल पाओगे, इसके लिए तुमको चाहिए क्लेमोर यूजर, बड़ी स्वॉर्ड का, इसको लेजर फोड़ पाएगा। लेजर इसके यूज करके होल्ड करके मारो, एक साथ में सब कुछ फोड़ देगा। अब करते हैं ना रेजर भी मेरे पास उसका ये देखो, ये स्वॉर्ड को टच करना है तो चमक गई है। वो स्वॉर्ड को टच करने पे तो मेरे को करंट लगेगा। अरे वो इलेक्ट्रोग्रानम दो,
ये अगर बगल में होगा उसके बाद उस स्वॉर्ड को टच करो, फिर वो एक समुराई निकलेगा, उस समुराई को तुमको मारना होगा, फिर पिक्चर्स मिलेगा तुमको। कुछ नहीं निकल रहा है। ये मेरे पास C1 का हो चुका है अभी देखो। कोई मतलब नहीं है बेकार। ये देखो तो स्टार्टिंग में ठीक रहता है या AR45 के पहले क्या बेकार। अरे बगल में इलेक्ट्रोग्राम दो, उधर मिलेगा, ये लेफ्ट साइड मिलेगा, राइट साइड जाओ, राइट साइड। इधर इधर नहीं, ये ना इधर सीधा सीधा वो देखो, ऊपर 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 देखो, उसमें दीवार मिलेगा। अरे मालूम है इनको, टाइम पे जाओ ना ऊपर। अरे रामी आ गया। ये दिखते से निकल जा। ये कहाँ से आ गया? वो रहा, ये कहाँ से आ गया? आप जाके उस शॉट को टच करो। ऐसे शॉट कहीं भी दिखे ना, टच किया करो तो समुराई को निकल जाएगा। समुराई को मारने पे तुमको ये समुराई अब मारे उसको चट्टी करवा देगा। बहुत बहुत भयंकर है ये। अरे इसको भी ऐसी की तैसी। एक बार बैनेट का वो फुल हो जाए ना, अपने बताता हूँ मैं इसको। आजा बाहर आजा, आजा टॉर्च करता हूँ। वही यूज करना अपना, वही पॉप। ये भागता रहा हूँ, पता है इसको। अरे मर गया मैं। मुझे क्या लगता है, फ्रीज करके आराम से मारो। ये ऐसे भाग भाग जाता है, लेकिन मारते नहीं करते हैं। योमिया का ये सही ऑटो टाइप है, नहीं पड़ता है। हाँ जल्दी जल्दी अब यूज कर फटा। टी-शर्ट पहले यूज करो, क्या कर रहे हो? अरे वो मैं उसका वो यूज कर दिया था। एक बार मैंने कहा एक ही बार में मारेगा वो। टी-शर्ट योमिया यूज करो ना। चेंज करने का मौका ही नहीं मिल रहा मेरे को। कोई नहीं, वो फिर चार्ज कर लिया अपना। पर मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। मर जाएगा लेकिन तुम्हारे आधों को मार दे। नहीं मार नहीं पाएगा, वो मर चुका है। रेजर भी उसको हेल्थ नहीं था। नहीं नहीं मर गया। डॉज करना आता है मेरे को। उसका पोपट बना रहा हूँ डॉज कर करके। तो जी एक बार पकड़ दिया तुमको ना, हां किसी कैरेक्टर को एक बार पकड़ेगा मार देगा। ए पिट गया, देखो देखो पिट गया। वो लगा फिशल मर गया, मर गया। अरे फिशल यूज करो, अभी तक मर जाएगा। मर गया। मेरा सिर्फ इसमें रेजर मरा है, उसके पास हेल्थ कुछ नहीं था। रेजर का अब भाई रेजर के पास सबसे ज्यादा उसको एक बार में एक काटा है। 7,000 हेल्थ है इस पे 11,000 है, इस पे 5,000 है। बैनिट पे 17,000 हेल्थ होगी, 17,000। वो तो मैंने तुम्हारा आपको कब सब बना जाएगा। 17,000 है इसमें। मेरे को अभी ये ट्री को लेवल अप करो क्राफ्ट करके, इसको फार्म किया था, बोल गया। फार्म नहीं किया मैं बिल्कुल। फूड क्यों यूज कर रहे हो? डायरेक्ट उसके पास चले जाओ। हाँ मैं भूल गया, वेस्ट कर दिया मैं फूड को। Let's move before the trail goes cold. फाइट के दौरान यूज किया पर फाइट के दौरान आपको जरूरत नहीं। फाइट के दौरान तो स्टैचू ऑफ सेवन का यूज करते हैं तो फूड मैं तो फूड कभी यूज नहीं करता पड़ा है। बस एक ही फूड यूज होता है, वो आपके कभी कभी इनके अंदर से नहीं आएगा। सॉर्ड वैसी है ये वो अपना क्राफ्ट करके वेपन को लेवल अप करो। मैं क्राफ्ट नहीं किया, ये मटेरियल ही नहीं मिलता। देखो इधर पड़े हुए ना मटेरियल को। मैं रेजर को लेता हूँ, रेजर हैवी यूजर है ना, ये 2-3 में छोड़ देगा। मैं अभी तक क्राफ्ट ही नहीं किया हूँ पता है। मैं वो स्टोरी करता हूँ, मेरे को स्टोरी करने में इतना टाइम लग जाता है कि मैं पत्थर तोड़ता हूँ। यहाँ पे कर लो एक ही बार में बताऊँ मत करिए। कैसे काम आता है पता नहीं, इसको तोड़। अरे वो लेवल स्किल यूज करो ना, होल्ड करके एक बार में सबको तोड़ देगा। खत्म कर दिया वो पीछे है, एक बार में भी सब तोड़ देगा। तोड़ने की जरूरत ही नहीं तुमको, इसको होल्ड किया रहो बस।
मैं बताऊँ ये करता हूँ मेरे स्किल यूज करो या ये बार मैं सब दूंगा तब लेकर पता है मेरे इसी काम आता पाँच कर देते बनता काम नहीं आता वही अब जोंगी मिल जाए अगले अगले अपडेट में जोंगी मिल जाएगा जोंगी का एक बार सीधा गाना बना देना अरे पर मिलने वाला का है जोंगी इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलेगा। I'm on the case. भाई वही तो अगर मैं जोंगी पे हार चुका हूँ अब मेरे पास कंफर्म है अगर मैं जोंगी निकाल कंफर्म है चाहे जोंगी निकाल मैं जोंगी निकालूंगा तो जोंगी उस टाइम को करता हूँ मेरे को चाहिए मेरे को कैसे जोंगी का बाद में फिर किसके भी से क्यों मिलेगा कि मिलेगा मुझे 2000 नहीं करना पड़ेगा 2000 बड़ा से करना पड़ता है मेरे में कोई भी नहीं मिलेगा मुझे बस समझ आ रहा है गांव पे लेकिन सब चाहिए इसके स्टाफ आप होना चाहिए ऐसे स्टाफ आप होना तब भी निकालूंगा चाहे गाँव हो जाए सब मिल आना है मैं टेलीपोर्ट मार दूंगा गलत ही जगह पे घुस गया गाँव निकालू कि स्टाफ ना होगा वो ही आ रही है निकालू 3.2 है मेरे पास क्या 24 में निकलेगा क्या जोंगली 24 में सुन गए मेरा तुम्हारा तो निकल ही जाएगा नहीं तुम हारे हो ना तुम सबने पर मेरे को मुश्किल ही मिलने वाला है मेरे को कद्दू नहीं मिलेगा तो नहीं लगता ये वेपन बैनर मेरे को किली चाहिए थी किली बोल रहा हूँ चीची ये वेपन बैनर की बात नहीं कर रहा हूँ ये स्टैंडर्ड बैनर पे मेरे को वेपन निकले कर दो पहला वाला वेपन है पहला वाला करूँगा एक फोर स्टार में वो उसके लिए अच्छा है सपोर्ट किचन पे उससे बेटा तो कीपिंग ये कैसी है मोना के साथ तो मैं खिलाऊँ ये कीपिंग जो है वो जो उसकी तरह दिख रही है फिसल की तरह इलेक्ट्रिक टाइप है क्या ये लोग इलेक्ट्रिक है नहीं मेरे को इनमें से कैरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए आइस टाइप है इसमें से मेरे पास ज़्यादा 2 5 स्टार है बस एक ज़्यादा तुम्हारे पास ये भी 2 5 स्टार तुम्हारे पास तो बतेरे 5 स्टार होंगे तो ही है भाई एक आंगवा दूसरी वो है ना बाकी तो चीची तो 0 स्टार है वो तो मैं जानता ही नहीं और जी मुझे चाहिए नहीं यूज़ करता नहीं फालतू दे रखा है जो मैं नहीं दे पाए मेरी वो ना के बराबर मेरे को जरा देखने दो चीची ये चलो कभी यूज़ कर दो मेरे पास इतने ये सिंचो भी चाहिए मेरे को सिंचो जाऊँ निकाल दूंगा एक टीम में जाऊँगी डाल दूंगा इस टीम में और क्या नाम दूसरी टीम में वो डाल दूंगा क्या कहते हैं पहले दो टीम ही लीड करते हैं दोनों टीम का काम हो जाएगा फिर मैं क्यों यूज़ करूँगा टीम को टीम को फिट करना आसान भी नहीं है तुम्हारे पास 5 स्टार के दो मैं सोचता था बहुत सारे बस यही दो बस है बाकी दो किसी हारा तो भी दिया था ये कैरेक्टर तुमको चाहिए पता है यार हाँ सिंचो तो योमिया के लिए योमिया के लिए तुमको ये चाहिए ओपन किया था वही मेरे को वो चाहिए तो मेरे को वैसे भी पसंद है स्टाइल पतला सा बहुत अच्छा कैरेक्टर भाई वो देखने में बहुत अच्छा वो लेके और बैनेट लेके दोनों का फिर दोनों ही अपने अपने फील्ड में आ गए जो मुझे भी चाहिए पर हम तो सेकंड टीम में मत आओ मेरे को तो ये पूरा पोस्टर मिल चुका है पूरा पोस्टर जितना बैनर है अभी नहीं लेट है थोड़ा स्ट्रीम बैनर मेरे को पूरा मिल चुका है
इसमें देखो एक ही सही है जो चैनल बैनर है, मेरे को एक ही चीज लगती है वो होना। अरे वो मेरे को भी सब चाहिए। सब डीपीएस और डैमेज बूस्टर का बहुत अच्छा काम करती है इसमें। और पेज टीम के लिए मुझे चाहिए, तो ओपनली सोच रहा हूँ निकाल ही दूँ क्या। तो मैं पेज टीम में यूज कर सकता हूँ, तो नहीं आया कभी तक, तो हीलर का भी काम करती है। मेरे को ये 2 दिन में जाएगा, 2 दिन में बैनर। 2 दिन में जाएगा, 2 नहीं 3 दिन, 17 घंटा 24 घंटे में 5 घंटा का क्या नाम है, वही कितना 24-25 तारीख को आएगा। मेरे पास 24 विशेष है, मतलब 23 है अभी। 24 को आएगा, कितना है 20 है, मेरा 20 देखो 24 20। को अपडेट आएगा। एक दिन तो खाली पड़ा रहता है, स्टैंडर्ड एक दिन अपडेट के एक दिन पहले जानते क्या होता, कोई नया नहीं होता, खाली स्टैंडर्ड बैठा रहता है बस। हाँ तो वैसे भी मैं बचा के रख रहा हूँ, अच्छी बात है। स्टैंडर्ड मैंने पे मैं खर्च नहीं किया अभी तक। मैं देखो एक दिन में पूरा का पूरा 11 विशेष इकट्ठा किया था। कौन सा? ये जो फर्स्ट वो है। हाँ ये वो बहुत अच्छा है, ये वो लगभग सब करेक्ट है, वो अच्छा है। हाँ ये उसमें भी तो उसके ट्रायल में भी है वो, ट्रायल में खेला था ना इसको, तो अच्छा है। ये देखो इसके लिए मेरे पास ये आ गई, ये देखो मेड है, और ये देखो इसका वो मेरे पास वेपन भी है मेड वाला। अभी नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। कितना पीछे है? 10 सेकंड कितना पीछे? 10-15 सेकंड पीछे हो गए। स्टार्टिंग में बहुत अभी जो तुम्हें मिल जा रहा है, स्टार्टिंग बहुत उसके बाद नहीं मिलते, उसके बाद हाँ वही, मेरे को पैसा वैसा नहीं लगाने का। अगर देखो स्टार्टिंग कितने चेस्ट खोल रहे हो, खुल गए, उसके बाद चेस्ट खुल गए तो अपना चेस्ट खोलो। मेरे को तो अभी से दिक्कत हो रही है, बाद की तो मेरे को पता ही नहीं क्या सीन है। ये देखो, ये है देखो सील्ड कैरेक्टर भी मेरे पास। 450 रुपए का रहता है, एक महीने में लगभग तुमको 3000 की बोल दे रहे, तो पैसा वसूल होगा। ये देखो इसका वेपन, और ये क्यों बिल्ड कर रहे हैं, क्यों अपने सबसे बाइक किया आपको, इसको तुम यूज करोगे है सील्ड के लिए अच्छी। इसको मैं बिल्ड नहीं किया हूँ, मैं इसको बहुत पहले ही मैं 50 कर दिया था। ये जब मेरे को शुरू में मिली थी ना, तभी मैं इसको 50 किया था। मैं इसका टैलेंट तो छुआ भी नहीं हूँ, ये लेवल 1 पे सब कुछ है। पता नहीं कौन जॉब में काम नहीं करते, सीटी जरूर पड़ती है, मैं इसको डाल देता हूँ। ये देखो 2 है मेरे पास, ये भी C2 की है, ये भी मेरे को बहुत मिली है। मैं सोच रहा जोंगली नहीं मिलेगा तो शिफ्ट कर दूंगा, इसको रख लूँगा जोंगली की जगह पे, कमी पूरी कर लेगी। वही सील्ड इसका भी तगड़ा ही है। अरे ये देखो ना, इधर देखो, ये देखो, ये ट्रायल देखो, भी देखो, इसको दिखाता हूँ। एक यही ऐसा कैरेक्टर है, ये इसको जॉब की जरूरत है। ये देखो, यही एक ऐसा कैरेक्टर है, इसको जॉब की जरूरत है। पता है, अगर इसकी हो गई उसके बाद इसको कुछ बिल्ड कर दो ना, इसकी जॉब से ही पावर मिलेगा। हाँ दोनों जियो कैरेक्टर किसी जॉब से कम नहीं रहती है। और यही नहीं पता, जब वो जो वेटर शोरों का जब बॉस अनलॉक होगा उससे फाइट करोगे ना, जॉन शीट लगाए रहो, उसका एक फोन अटैक रहता है ना, उसका तो जॉन शीट भी लगाए तब भी तुम मर जाओगे, लेकिन इसकी तुम शीट लगाओगे नहीं मरोगे। तो किसके ऊपर जाऊँ मैं? जोंगली छोड़ दूँ, इसके ऊपर आ जाऊँ? ये देखो इसका डिफेंस देखो, डिफेंस इसके अंदर जोंगली अपना एचपी से डिफेंस देता है, ये डिफेंस से डिफेंस देता है। डिफेंस देखो इसके अंदर इन लोगों ने कितना दे रखा, 2300।
और टैलेंट सब कुछ 8 लेवल का है इसमें, मतलब फुल मैक्स 0 की या C0 की। क्या रखते हो? इसको मैं 60-50 की है। ये मेरी नहीं है, मतलब ये गेम वालों की है। और ये देखो इसका आर्टिफैक्ट। ट्रायल वर्जन वाला देख रहे हो? हाँ ट्रायल वर्जन किया करो, ट्रायल वर्जन का ट्रायल किया करो, वो मिलता है। ये देखो तरीके इनके इसका आर्टिफैक्ट देखो। आर्टिफैक्ट दिखाओ। ये एक आर्टिफैक्ट अभी मैं खास किए देखो खास इसके लिए बहुत सारे आर्टिफैक्ट हैं। देखो ये खास किया हुआ है। और इसका वेपन जो मेरे पास है वही वाला है। आर्टिफैक्ट इसका यही में ये रखी है। और इसका वेपन देखो जो कि मेरे को मिल गया ये था। आर्टिफैक्ट इसके और इनको के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो वेपन, यही वेपन मैं क्रिएट किया हूँ। हाँ ये रही ना, ये देखो ये रही। सही से नहीं हुआ अभी तक। ये देखो देखो ना, बताता रहो योगिया को देखो, इसका वेपन और उसका आर्टिफैक्ट देखो। ये सिने ऐसा नाम भी इसका ऐसा है ना, वो बोलते बोलते हाँ ये वाला वेपन। अरे यही चाहिए ना मेरे और को। आप इसका वो देखो मेन स्ट्राइक देखो, फुल गाड़ी देखो, को यही चाहिए होगा सब। कैरेट डैमेज वाला वेपन है वो तो। हाँ तो वही तो है। टैलेंट भी पूरा मैक्स करता है इसमें। ये पावर में ऐसे खेल के देखा थोड़ा भी। ये तो मुझे बस है। कितना टाइम लग जाएगा वो आर्टिफैक्ट्स बनाने में? साल लग जाएंगे। आगे मान लो निकालो जरूरत में, लेकिन निकल भी जाएगा तो अपडेट करने में ऐसी की तैसी जाएगा मेरे को। ये देखो अभी ये हुआ, इसके पास सील लगा है। मैं कंफ्यूज होता हूँ, इसका डैमेज है वो मार के बहुत बंदा। Time to clean up. Close the ship down. Fire hazard. You're toast. इसके बाद हम स्विच मारते तो It's a good night shift. I must leave no stone unturned. Here come the fireworks. Time for a light show. ये शील्ड भी तोड़ देगी तुरंत ही। नहीं नहीं उसकी, अरे उसका देखो शील्ड है 83 लेवल की है वो भी। उसका शील्ड है अरे वो देखना सैनिक का क्या बिल्ड क्या है, इनको लगाओ बिल्ड चेक करो, पॉज मत करो, वाटर पॉज हो जाएगा। सैनिक को लगा चेक करो, फिर क्या दे रखा है। हाँ ये देखो वेपन में ये दे रखा है जो कि एलिमेंट मास्टरी। एक चेक लो ना, अभी एक हो जाएगा, एक हो जाएगा अभी किस तरह जाएगा। ये देखो आर्टिफैक्ट्स में ये है नोबलेस 2 पीस एलिमेंट डैमेज बोनस है और क्रिम्सन और नोबलेस 2 पीस। इसको भी मैं सोच रहा था इसको देख के बिल्ड करूं। अरे क्या होता है जिंदगी में। इसका मैं इसके लिए इसका वेपन निकाला था पहले से ही, डिफेंस वाला। और बैनिट का तो उसमें क्या ही बिल्ड करना है, वैसे बिल्ड पड़ा हुआ है।
मैंने सोई नोबलेस 4 पिक चाहिए मतलब हाँ वो आर्टिफैक्ट चाहिए ना, वैसे तो बिल्ड ही पड़ा हुआ है। नोबलेस है तो काम भी कर सकते हो कि नहीं बैनेट अभी होके क्या करेगा, बैनेट अभी देता सही है पर ये गाड़ी एचपी और नोबलेस कर सकते हो, उसके लिए तुम फ्लावर का एकदम फुल कर दो और काम हो जाएगा। फ्लावर को फुल कर दो साइंस में एचपी के दो, साइंस में एचपी के दो यार उठाए नहीं वो कोई फोकस फायर हैजर्ड सबसे इजी बिल्ड करना होता ये मैं ये सबसे अच्छा है तो बिल्ड करना टॉप से As a dutiful maid woman, you're toast! जीवन तो है Time for a light show! इसको तो एक ही जगह पे खड़े होकर Time to clean up! Leave it all to me! Here come the fireworks! Fire hazard! बहुत गंदा मार दिए भी। मैं सारा कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके साथ खेल के देखते हैं, इसके साथ अगर मैं खेला हूँ पर मिल गई है उसके बाद नहीं खेला। ये गिटार वाली की इसका भी कोई बिल्ड है क्या? डिफेंस है इसका 2000, अटैक 16000, मतलब 16000 बोल रहा हूँ, 1600 HP। अच्छा वेपन में सेम डिफेंस वाला वेपन है इसके पास। इसकी ये टीम है, काया है इसमें, काया के पास भी एनर्जी रिचार्ज। ये इसके पास कौन सा, ये क्रिट डैमेज। इनका भी देखो आर्टिफैक्ट्स और ये इलेक्ट्रो, ये भी अपने सीढ़ी के लिए आनी जाती है। Dodge this. Come a little closer. You're in for a little shock. Let's spark things up a little. This moment will be frozen in time. Try to it! कार बजा रही है। Cool it. Don't get frostbite. Surrender and be gentle. Amp it up! Power cord! Freeze. Oh, so sorry. मारने में हर कोई कैरेक्टर इतना अच्छा है। आवाज नहीं आ रही है। जो है बहुत ही अच्छी कैरेक्टर, पर इसको भी यूज नहीं करता मैं बिल्कुल। शुरू में मिली थी बस, शुरू में खेला था इसके साथ। इसका भी मतलब क्या सीन है,
क्रिट डैमेज वाला वेपन है आर्टिफैक्ट्स की वो। अरे ये लोग भी तो जीरो के साथ ही देते हैं, या तो इन लोगों ने छुपा रखा होता है कितने के साथ है। इसकी जगह मोना आ गई है ना। मैं करता हूँ उसको कोई करे जाए ना करे। चीची कैसा, मतलब चीची जो है कैसा कैरेक्टर है वो पूछ रहा हूँ। चीची कैसा कैरेक्टर है? चीची को बनाती हैं लोग डीपीएस पे ना है डिकेटर भी बनाए तो दोनों में से को काफी के पास। ये नया कैरेक्टर है क्या? ये क्या नाम है, अभी दिखाई देगी हीजो के बाद वाले। तो हमको खेलने को तो नहीं मिली, मतलब ये तो ये यालन इसको तो लेकर लोग सोलो करते हैं, पता नहीं कैसे सोलो करने में सबसे अच्छा प्लेयर अंदर कौन सा है? सोलो बॉस मारने में कौन? मैं एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, इसको लेके बंदे ने सोलो किया था बॉस को। तो यूट्यूब वाले भैया कोई भी लेके सोलो करते सब तो बिल्ड है, सारे आर्टिफैक्ट है, सारे अच्छे वेपन हैं। वो सिनियर को भी देके सब कुछ कर सकते हैं। नए प्लेयर होते हैं देखा नहीं भैया सिनियर भी अच्छी है, लॉन्ग तक सिनियर यूज करते हैं। पर मेरे को अच्छी हो, मतलब अच्छी तो है ये, तो मेरे को ये चाहिए राइडन सोगन। सबसे सही है सोगन चाहिए मेरे को भी चाहिए। मतलब मैं देखा हूँ उसको, मैं डर गया था समझ लो इस तरह से मैं उससे लड़ता भी नहीं था। कर चुका मैं, जीत भी चुका हूँ दोनों फाइट। अरे बहुत हार्ड था पहला फाइट निकालना। मतलब मेरे को क्या करना था, इसका एचपी आधे से थोड़ा सा कम करना था और उसके बाद बचना था, डॉज करना था बस। उसको परेशान करके रख दिया था मैं अपने आप ही। किसका? नहीं किसी का शील्ड यूज नहीं किया मैं, बैनिट ले रखा था, बैनिट से भग रहा था इधर से उधर में, गोल गोल घूम रहा था उसके आजू बाजू। भगने में तेज हुए है बस इसमें नहीं भगने नहीं हील करने बोलते हैं सारे पुरुष गिरा डालते हैं। मेरे को नीचे में से सिर्फ ये चाहिए। तो कहीं भी रहोगे अगर इसने अटैक किया तो पड़ेगा ही नहीं। उसके अटैक के लिए उसने प्रैक्टिस करवाया था ना, जो ये क्या नाम है मीका ने वो करवाया था ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग वाला कर दिए? हाँ मीका ने ट्रेनिंग कराया था ना मेरे, मतलब हाँ ट्रेनिंग में पास कर लिया मैं आराम से। उसके बाद ही तो मैं उसको जाके हराया हूँ राइडन सोगन को। नहीं मैं दो बार मैं पिटा, तीसरी बार मैं उसके मूव समझा, बाद में मैं उसको आराम से फेल दिया ऐसा बचने के लिए। तभी तो मैं इसको निकाला दोनों बारी में राइडन सोगन को। नहीं मैं पहली बार इससे लड़ा था मैं, उसके बाद मेरे को अंदर डर घुस गया था कि नहीं हरा पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा कैरेक्टर नहीं। ट्रेनिंग में बैनिट से ही निकाला था, मैं। बैर को बैनिट लगता है थोड़ा फास्ट दौड़ता है तो उससे निकाला था मैं। पता है एक एनिमी नहीं आता बंदूक करके जो वो दिया रहता है, बंदूक लगे गोली मारता है। केली की उधर खड़ी हो जाती तब गोली नहीं लगती है। कभी को मार ही नहीं पाता है, कभी हाइट छोटी है ना इसलिए। वही इसके बाद जाके खड़े जाके वही मैं बहुत बार केली जब खेलता ना होते तो मैं ऐसे ही करता हूँ, उसके पास में खड़ा होकर अटैक मारता रहता हूँ, कुछ नहीं कर पाता। गोली मारेगा कोई मतलब पर वो शील्ड लगा लेता है, शील्ड के बाद डैमेज कम पड़ता है। हाँ वही सही, मतलब शील्ड लगा लेता है ना, वो मार ही नहीं पाता उसको।
मेरे को ये थोमा पता नहीं क्यों मिल गया दिमाग के से मेरे को। पबजी का जान दो बहुत शॉर्टकट समझो क्लियर है। अरे वो तो मेरे को ये भी मिल गई। मैं काया से ज़्यादा इसको सोचता हूँ, इसको करूँ कभी करना हो तो। रोजारिया क्योंकि काया का वो गोल गोल घूमता, पर इसका अगर बॉस को फंसाना तो इसका करना चाहिए। बॉस के मुंह पे मार दो, खड़ा लगा। आय का चाहिए, आय का के जैसा बहुत चाहिए। मैं तो यही यूज करता हूँ, उसी पे पेंट किया हूँ। देखो मेरे पे ये वेंटी, ये पता नहीं क्या है भाई। मैं सोचा ये फ्री में मिलने वाला है, डीडी भी फ्री में मिलने वाला है, पर दोनों में से कुछ नहीं मिला। मैं गेम स्टार्ट किया था, मुझे लगा था सारे कैरेक्टर फ्री मिलेंगे। मेरे को खुद लगा था ये चीज। जब काया ये सब नहीं मिले थे, काया ये सब फ्री नहीं मिले, सबको लगा सब फ्री मिलेंगे। तो भाई मेरे को ये मिला, देखो एम्बर मिली, खुश हो गया मैं। चलो कोई एक नया कैरेक्टर मिला, इससे खेलेंगे। उसके बाद मेरे को काया मिला, उसके बाद लीजा मिली, उसके बाद बारबरा मिली। मैं सोचा सब मिलेंगे, उसके बाद ऐसी की तैसी कोई नहीं मिला फ्री में। ये काया ये मिला, ये एम्बर मिली, काया मिला, तो मैं बड़ा नाराज हो गया था। अब क्या यार, इसमें गेम खेल रहा है एक ही कैरेक्टर है, तो ये सब का फालतू को दे रहे हैं, फालतू कैरेक्टर। अभी देखो मेरे को नीचे से सिर्फ एक नहीं मिला, सिंचो, बाकी सब मिल रखा है मेरे को। अगले महीने में आएगा, शायद जानी के साथ आएगा। निकालने का ट्राई मैं लेना था जॉनी के साथ, ये नहीं यार खराब है भाई। सिंचो के चाहिए, सिंचो। और ये पता नहीं कौन है, इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ गेम के अंदर। ये देखो सिंचो, मतलब उसके नोबल के बाजू में जो ये सही अच्छा कैरेक्टर है। पहली बार तो देख ही रहा हूँ इसको। ये क्रायो सपोर्ट भी अच्छा, मतलब क्रायो भी अच्छा है यार, देखना अच्छा है। क्योंकि जो नॉर्मल अटैक रहते हैं ना, उसको क्रायो से यूज कर देते हैं। आइसक्रीम खा रहा है ठंडी में खड़ा। और इसका क्या सीन है, ये क्या नाम है इसका, सुक्रोज। ये को पहली बार इन लोग को मैं देख रहा हूँ, पहली बार यार मिली है पता नहीं। मैं जीन के साथ खेला हूँ, ड्यूलुक के साथ खेला हूँ। चीची तो मेरे को भी मिली थी, पर इसकी स्टोरी देखी थी मैंने। हाँ भाई, चीची के साथ तो खेला ही नहीं, इससे तो बात हुई थी सिर्फ थोड़ी सी। इसके बाद इसको उसने पता नहीं क्या किया, निंगवांग को दे दिया। फार्मेसी रहती है निंगवांग के पास। मोना के साथ खेला हूँ मैं, उसकी वो गोल्डन एप्पल में। सारे आते हैं। कैली आई थी, पर इसके साथ खेला नहीं क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही है। भाई बम छुपाई रहती जिसमें। हाँ पहला किया था वही। और बाद में बोलती है कि मैंने हर्ट कर दिया। मैं किसी को हर्ट नहीं करती हूँ, भाग जाती हूँ वहाँ से। मैंने खेला था। उसके बाद ये समझाती है, क्या नाम है, चीन। ये समझाती है इसको, नहीं ऐसा नहीं है। चीन ही रहती है ना, मेरे को याद नहीं है अभी। कैली जाती है जब उसके पास। हाँ जीन रहती है, याद है, मेरे को याद है। जीन समझाती है ऐसा नहीं है, वो मॉन्स्टर, मतलब मॉन्स्टर का। और ये भी पता नहीं कौन है, छोटी बच्ची। चाइल्ड के साथ भी खेला हूँ मैं, जोंगली के साथ खेला हूँ, आज इसके साथ भी खेल लिया मैं। गानियों के साथ भी आज खेल लिया मैं। भूतों के साथ भी खेल लिया। इसकी तो ऐसी की तैसी, इसका खुद हेल्थ खत्म होता है। मैं अभी तक इसके साथ नहीं खेला हूँ। ये क्या नाम है, कजुआ। अरे मैं जब आया था गेम के अंदर, ट्रायल था, तब मैं इसके साथ खेला था। और अरे मैं जब गेम में आया था, मेरे को कुछ पता ही नहीं है सब क्या चीज़ है। अरे भाई काजुआ मिल गया होता ना, बताओ। काजुआ के लिए मैंने अपने 2 महीने का जितना फ्री मोड बटोरा था 2 महीने में, सब इस पे लगाया हूँ। तब भी नहीं मेरे को मिला।
2 महीने बाद 15 दिन के बाद 15 दिन में एक ऑर्डर निकलना बंद किया था, इवन उसमें कटोरा हूँ उसके बाद मेरे को मिला था वो, और इतना फिर मैं उससे कहूँ तो मेरे को अरे मैं जब गेम के अंदर है मेरे को कोई मिला ही नहीं था कि मेरे को कोई बताता। मेरा पहला बंदा बिल्कुल क्या आया था कि मेरा पहला बैनर ये था कि शाम आया था और वो आया था, मैं तो सोच रहा था शाम निकाल, उसके बाद मेरे को पता लगा पासवर्ड आ रहा है, खागा अच्छा प्लेयर तब फिर रहने के बाद इतना ही सबसे बेस्ट था, तो इसी को निकालता हूँ बाकी सबसे लोग। मैं ये नाम को छोड़ दिया, ये नाम को निकाल भी ना पाते क्योंकि मेरे पास प्रीमियम नहीं था। तो मेरा किस्मत अच्छा है, हार्ट बीटिंग पे ही मुझे जो मिलता है हार्ट बीटिंग पे ही मिलता है। एक आध बार 2 बार तो ये हुआ है हार्ट बीटिंग पे भी है। मैं देखूंगा जोंगली निकल गया तो निकल गया, नहीं तो छोड़ो 24-25 करूँगा। जोंगली है, काजुआ है और ये रेडर शोगन, ये 3 कैरेक्टर ऐसे है ना, अगर तुम जेंशिन खेल रहे हो तुमको चाहिए ही चाहिए। मेरे को राइडन शोगन चाहिए, इलेक्ट्रो का काम बहुत तगड़ा करती है ये। तुमको चाहिए वो इशारा तो आज ना कल मिल ही जाते ये जिस दिन आएगी ना मेरे को पता चल जाएगा, मैं उससे पहले से जमा करके रखूँगा, पैसा लगा दूंगा, अपन इसको निकालूंगा, ये सीन करूँगा। अभी मैं इसके साथ खेला था ना, इसकी स्टोरी कल या परसों दी थी मैंने। वही इसका अल्टीमेट बड़ा तगड़ा है। पता है जब ये आया था, क्या नाम है, काजुआ, ये देखो जब ये काजुआ आया था, जब इसका इवेंट आया था ना, और जब मैंने ये निकाला था हेजू, मैंने सोचा कि हेजू और ये दोनों सेम ही है, ये हेजू और ये दोनों सेम है, ये सोच के निकाला था मैंने। पिछले साल तो मैं गेम में ही नहीं था, मैं तो अभी भी एडजस्ट था। अगर मैं आता और मेरे को मिल जाता तो मजे की बात थी। अरे मेरे को तब पता होता तो मैं यही सब करता, मैं आया गेम के अंदर, मेरे गेम की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। कोई नहीं, अभी आएगा ना कभी तो एक क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। Doing detective work means you gotta walk the walk. No, I mean literally. I need to search high and low for evidence. चलो ठीक है, फिर स्ट्रीम बंद करने का बंद कर देता हूँ मैं, हो गया।